पुढच्या कारण चालू चल त्यातून तर लावलं का तुझा आवाज येतो? यस आम्ही कनेक्ट झालो. याचं काही काम आहे का? हॅलो सर, आवाज इको होतोय थोडासा. ओके तो स्पीकर ऑफ कर. आवाज कमी करू. ऑफ अनम्यूट तुम्ही सगळ्यांनी म्यूट करत येतो सर आता आवाज? हो सर, आता क्लिअर येतोय आवाज. सर आपलं नाव कळू शकेल का? कोण बोलतो? मी कोणाशी बोलतो ते? सर मी डॉक्टर अविनाश जाधव, स्वस्थ वृत्त डिपार्टमेंट. सर जॉईन होतो एक 2 मिनिटात. अश्विन फोटो काढ. किती लोक जॉईन झाले? फोटो काढ बरं, सगळ्यांचा मिळून एक फोटो काढते मागे जाऊन. आपण डेस्कटॉपवरच ठेवलं होतं. तुझं उद्याचं ते ट्रायल घ्यायचं केव्हा करशील? 5 वाजता कर, 5:30-6ला कर. 5:30ला वर चालली जाशील आणि त्याला सांगून देशील याला की ते खोलून ठेव आणि लावून बोलणं सुरू कर. मला फोन करशील फक्त चालू कर. 2-3 लोक घेऊन जाशील. तुमच्या बॅचचे जेवढे स्टुडंट आहेत सगळ्यांना बोलवून घ्या उद्याच्या कार्यक्रमाला. उद्या ते वाटप पण करायचं आहे ना मानसवर.
Very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Gururaj Varnale, Assistant Professor in Rasoushadhis and Biological Department, also organizing coordinator of this national webinar. A very warm welcome to all delegate respected doctors in this mega event of national webinar on role of Rasoushadhis in neurological disorders, organized by our principal and department of Rasoushadhis and Biological Dhanvantari Ayurvedic Medical College, Udgir. Let's start the webinar with Lord Dhanvantari Pujan and Dhanvantari Vandan. I request our beloved principal, Dr. Dattatre Patil sir, and our head department of Balaji Kattekar sir. Also, I would like to request Dr. Sahebrao Gaikwad sir, please do the Dhanvantari Pujan and Dhanvantari Vandan. Sahebrao Gaikwad किती गेला? तो इथे आहे ना? बरं. Namaste to all of you. सरशेट्टी आहे का? Namaste. ठीक है सरशेट्टी है ना शंखं चक्रं जलौकां दत्तमृतकटकं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्ध्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं Thank you, sir. Now I would like to request our principal, Dr. Dattatre Patil sir, honor the Dr. Sahebrao Gaikwad sir. He's the ex-vice president of MUHS Nashik, MCIM Mumbai. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Balaji Kattekar sir, Professor HUD of Department of Rasoushadhis and Biological, please introduce our inaugural guest. Hello, good afternoon all of you. I am Dr. Balaji Devrao Kattekar, Organizing Committee Secretary, Professor and HOD, Depth of Rasoushadhis and Biological, Dhanvantari Ayurvedic Medical College, Udgir. As an inaugural function, guest of this national webinar, we have invited one of the dynamic personality with positive approach and creative attitude person. He is none other than Bhismacharya of Ayurveda, Honorable Dr. Shriram Savrikar sir, who is advisor to Honorable Sripaji Naik, Ministry of Ayush, Government of India. He is member of Management Council, MUHS Nashik. He is ex-vice chancellor of Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. Sir has been awarded so many awards in the field of Ayurveda. Now I request only one NQ person, Dr. Shriram Savrikar sir, please deliver inaugural speech.
I'm very much thankful to the organizers for inviting me to inaugurate this national webinar on the subject of role of Rasoushadhis in the neurological disorders. My friends, now almost it has been 1 year has been lapsed, and we are entering the second year of this COVID pandemic. Faced so many problems, and this present seminar is being attended by the stalwarts like Professor Dr. Sara Shetty, who has recently came back from Russia. Our very close friend, Professor Dr. Khapade sir, Dean, Government Ayurvedic College, Usmanabad, and other speakers as well. And in this pandemic, people are trying different approaches to solve the current problem. But we all know that not much progress has been done in combating this particular disease. In this disease, even Ayurvedic community is also trying different approaches. In that, the Rasoushadhis are playing a very important role. We know that where no drug works, the Rasoushadhis play miracles. And this pandemic is also not a very exception to that. It has been observed and reported also by many of our friends that Rasoushadhis are doing a good job, playing good role in this pandemic as well. Coming back to the current topic of discussion of this webinar, the neurological disorders. Neurological disorders, as we all know, they are very difficult to treat. Very difficult to treat. Generally, the manifestations of neurological disorders are come to fore or observed after a very long time. That is, the disease is there inside the body for long years, and later on the presentation comes. The patient comes to you when he may not be saying that the disease is old, but on examination it is observed that the disease is very old. And usually the disease has gone inside the body, because we know that the Majja Dhatu, usually we relate the neurology, the nerve with the Majja Dhatu. Of course, there is a big debate on whether the Majja Dhatu should be related with the nerves or not. But anyway, even though it's a muscular tissue, sinews, etc., the dhatus which we are approaching, they are at the 4th or 5th level. That means rasa, rakta, mausa, meda, asthi, and majja. So almost it is the 7th level dhatu is there. So till the disease reaches the majja dhatu, it has deepened very much, and that's why it becomes very difficult to treat. Of course, people expect that every disease should be cured immediately, instantly they want relief. But we already know, we know that it is very difficult to treat. In such situations, of course, the Rasoushadhis, as we know, they are very effective in very small doses. They are effective instantly, and then they can be given in any condition, as we all know that. That is said that there is not a single disease which cannot be cured by Rasoushadhis. So in such a situation, Rasoushadhis play a very significant role in every condition. So neurological disorders are not an exception to that. Particularly neurological disorders which are faced by us, very common disorders like the Pakshaghat, hemiplegia is there, sciatica is there, backache, which is originating from because of the neurological disorder, cervical spondylitis, which terminates into neurological disorders. So many diseases are there which ultimately turn into neurological disorders. So in that case, in those conditions, along with other therapies, we may have some solutions with the Rasoushadhis. But mind you, as we know that even though the Rasoushadhis are very good, but they should be used very cautiously. It is known that Rasoushadhis are, if they are not used appropriately, they may cause some problems as well. They may become very toxic. We know that a drug, which it is said that a drug, if it is used appropriately, a poisonous drug, however poisonous it is, if it is used appropriately, it proves like an amrit. We know that. This is a power.
So, but if even after Amrit also, a very good drug also, if it is used inappropriately, it will create many problems. It will create many complications as well. So Rasoushadhis is a two-pronged tool, or we can say a weapon. This weapon, if you use it appropriately, it can do miracles. But the weapon is misused if it is not kept in your hand. We should remember that the handle of the weapon should be in our hands. So this weapon we should use very carefully. The handle should be used properly. And we have to examine the condition exactly at which is the stage where we can use this Rasoushadhis. It's not that in every condition it is necessary that you should use the Rasoushadhis. Of course, Rasoushadhis are effective in every condition. But still, whether we should use the Rasoushadhis or not, that depends on the person who is using it. So Rasoushadhis are Rasavidya, which we call. Rasoushadhis are very specific. It is said that they are more experts, or they are more respected than even the surgeons as well. So if you want to avoid surgeries, you approach your Rasoushadhis. So that is what is being said, but provided they are used effectively, appropriately. So it is our job that we should use them. Unfortunately, Rasashastra, which we are learning since so many days in all the colleges, you are learning Rasoushadhis or Rasashastras. Most of the times what we do, our teachers or our students do, we concentrate on preparation of Rasoushadhis. Not much mind is given to the application part of the Rasoushadhis. Application, what is the clinical application of Rasoushadhis? So clinical Rasoushadhis, application of Rasoushadhis is very important, which is the most neglected subject in our studies. UG studies as well as the postgraduate studies. People take very proudly say that I am able to prepare the Pottadi Kalpana, I am able to prepare the Kopis Rasayan, Parpadi, etc., etc. Of course, that is also good. I'm not saying that is not important. That is, of course, important. It is very, I know that it is very difficult to prepare a good Pottali, difficult to prepare a very good Kopis Rasayan in a timely manner. But at the same time, preparation of Rasoushadhis is a different aspect, different field, and application of Rasoushadhis is a different field. So unfortunately, the application part has been forgotten by us. So I, taking the advantage of this particular platform, I sincerely request my all Rasa friends, Rasavidya friends, or Rasashastra teachers, that pay more attention to the application part of the Rasoushadhis. Because that is what, you know that, we all know that. How many of our students are going to prepare the Rasoushadhis or enter in the industry for preparation of Rasoushadhis, and how many are going to become a practitioner? We all know that 90 to 95% of our students are going to become a practitioner. So these practitioners should be aware of using the Rasoushadhis, application of Rasoushadhis, rather than preparation of Rasoushadhis. Because we can get the Rasoushadhis prepared from the experts. We can purchase them and we can ask our friends who are very expert in preparation of Rasoushadhis. But we cannot ask our friend to treat our own patient. On the patient side, you have to take your own decision whether how it is to be used. So nobody is coming to rescue while using the Rasoushadhis in the patients. So it is very important for every doctor, every Ayurvedic doctor, my friends, to know how to use, how to apply the Rasoushadhis. So I'm not saying that preparation for Rasoushadhi is not important. It is equally important. But rather than that, it is more important to know how they should be used in the patients. So this is very rightly, the Dharmatra Ayurvedic College has chosen this subject, application for Rasoushadhis, role of Rasoushadhis in treating the neurological disorders. So you will be addressed by many experts, an expert of Rasavidya like Kapade sir, who has been using Rasoushadhis since very long. He takes pride in using the Rasoushadhis, not only in preparing the Rasoushadhis. I know him very well. I know him very long. I know him as a very good practitioner, Rasa practitioner, Rasoushadhi practitioners. So people like, the guidance of people like him are very much required, how to use the Rasoushadhis.
So this is the platform where it can be used. At the same time, you are also will be addressed by Dr. Sara Shetty, who will be chairing the next session, who is an expert himself and a research worker, a very highly reputed research personality, a person of repute of who has an abroad experience. Now he has experience in Russia. Also, he has an experience in. He has experience, a high experience in research field using the Rasoushadhis, preparation of Rasoushadhis. Many things here. You are fortunate to have here as a chairman of your one of these sessions. So you'll be listening from him various topics. Then Dr. Mukund Sabnis will be addressing you, who is a very good practitioner itself. He uses the different types of drugs. He knows the problems in using the Rasoushadhis, the hazardous things, how to approach the toxicological effects, how to safeguard our patients from toxicity of Rasoushadhis, what care should be taken while Rasoushadhis. All these things you will be knowing from this. Dr. Pagire is also one of the speakers. He is also one of the experts in Rasashastra. So many experts, chosen experts have been invited in this conference, in this webinar to address you. I know that you will be benefited from the expertise which they will be giving. And I wish them all very good luck. Good luck to participants, also the listeners, also to have a feast of these the knowledge of regarding Rasoushadhis. I once again congratulate the Dhanvantari Ayurved College in the organization, Dr. Balaji Kattevar, my friend Dr. Tap Patil, who is the principal of this college and vice president of the MCIM. All these people, they are very experienced people. They care for the students. So they are organizing various types of programs. Recently, I have addressed one of the program on Swasthya. That time also it was a very good program they have arranged. It shows that how they care about the students and all the people, all the community. So I wish them very good luck, and I congratulate them for organizing this seminar. And thank you very much for giving me a chance to speak on this occasion. That's all, my friends. With these words, I take your leave. Thank you very much. Thank you. Over to the organizer. Thank you, Dr. Shriram Savrikar, sir, for a marvelous speech and wonderful session. Now I request ex-vice president of MCIM, Dr. Sahibrao Gaikwad, sir. धन्वंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उदगीर जो नेशनल वेबिनार सब्जेक्ट ऑन रस औषधि इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये कार्यक्रम के लिए मैं शुभेच्छा देता हूं. थैंक यू. Thank you, sir. Now I request our principal and organizing chairman, Dr. Dattatreya Patil, sir, please address the national webinar. Honorable inaugurator of this national webinar and our advisor, renowned stalwart in Ayurveda, ex-Vice Chancellor of Jamnagar University, Vaidya Shriram Savrikar, sir, Honorable Speaker and Dean Government Ayurveda College Usmanabad, Dr. Prakash Ji Khaparde, sir. Another speaker, Honorable Dr. Vaidya Mukund Sabnis Ji, ex-Dean of RGUHS Nashik, Vaidya R.S. Shetty, sir. Academic Council member, our guide, Honorable Pagire, sir. And all the teaching PG students, UG students, practitioners who have joined, rather participated in this national webinar on neurological disorders related with Rasoushadhis. I welcome you all on behalf of our institution. I hope this webinar will definitely enrich and enlighten knowledge of all the participants. Both the speakers are renowned. They have devoted a lot in this particular subject. Their experience will definitely be useful for we all. Thank you. I extend my regards to all the participants and all the dignitaries. Thank you, one and all.
Thank you, sir. Thank you very much. Let's start the first session of this national webinar. For first session, our topic is Ayurvedic management of cerebral palsy. I request Dr. B.D. Kattewar sir to introduce our first session chairperson and expert speakers. Thank you, all of you. For the first session, as a chairperson, we were invited Honorable Dr. Revansiddha Sar Shetty sir, ex-Dean, Rajiv Gandhi University, Health Science, Bangalore, Karnataka. He is Professor, Ayush Chair, Ministry of Ayush. Sir have around 34-year work experience in UG and PG. Also research and development experience in Rasoushadhis and Vaishnavi Kalpana field. He is ex-PhD committee member, Rajiv Gandhi Health University, Bangalore, Karnataka. He has awarded Professional Achievement Award at Pune and also Best Research Paper Presentation Award. It is also at Pune. Sir visited abroad for first Asian Conference and 5th International Congress on Oriental Medicine. Sir has also visited Germany, France, Switzerland, Italy, Russia to present and contribute field of Ayurveda. He published various research papers. Some of them are on pain management, new formulation in the diabetes mellitus, and concept of nanotechnology. This is our chairperson. Now, for the first session, as an expert speaker, we have invited Honorable Dr. Prakash Khapade sir, Dean Government Ayurveda College, Usmanabad. Sir selected as a Dean through MPSC exam. Sir has published 3 books which are very popular among the students, that is Practical Rasoushadhis, Practical Vaishnavi Kalpana. Sir has published articles and research paper in the national and international level, delivered many guest lectures, various national and international conferences, supervised postgraduate thesis. Sir has undertaken non-teaching responsibilities. Sir has awarded Rasacharya Award in 2015 at Nagpur Golden Jubilee Function and Adarsh Shikshak Puraskar in 2010. He has already made a mark in the field of administration by his sincerity, punctuality, devotion and dedication to his duty. Person of such magnitude truly inspires us. Now I request Honorable Dr. Prakash Khapade sir, please deliver the first session. Dr. Prakash Khapade sir. नमस्कार. जेवढे विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत, जे लोक ज्या ज्या पदावर आहेत, त्या पदावर असताना त्यांनी चिकित्सक बनण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे आणि चांगले चिकित्सक बनण्यासाठी जे काही करण्याची गरज आहे, त्या सर्व गोष्टीसाठी मी सर्वांचं अभिनंदन करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की हे जे काही प्रेझेंटेशन आहे, हे प्रेझेंटेशन तुम्हाला तुमच्या क्वालिटी वाढवण्यासाठी मदत करणार आहे. याच्यातून किती पैसा मिळेल हा नंतरचा भाग आहे, परंतु तुम्ही तुमची क्वालिटी जर वाढवली तर निश्चितच तुम्हाला जास्त ज्ञान, जास्त सन्मान आणि त्यानंतर येणारा पैसा, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सातत्याने मिळत राहतील. त्यामुळे ह्या प्रेझेंटेशनचा उपयोग आपली क्वालिटी कशी वाढवता येईल, आपलं नॉलेज कसं वाढवता येईल, आणि ज्या गोष्टी पुस्तकांमध्ये नाही आहेत. बरेच लोक विद्वान आपल्याला भेटतात आयुर्वेदामध्ये, बऱ्याच गोष्टी करतात, पुस्तकं लिहितात, शिकवतात, काही मेडिकल ऑफिसर आहेत, काही चिकित्सक आहेत. परंतु हे सगळं करताना जो पेशंट येतो, त्या पेशंटला जेव्हा आपण
बरं करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या बरं करण्याच्या प्रयत्नात आपण किती सक्सेसफुल राहतो याचा विचार न करता फक्त प्रयत्न करणे, ह्या प्रयत्नांना लोक परमेश्वर म्हणतात. आणि म्हणून वैद्याचं नाव, डॉक्टरांचं नाव हे सातत्याने त्या फील्डमध्ये घेतलं जाते. प्रश्न राहिला रसवैद्यांचा, तर सिद्धरस करिष्यामी आपण हे जे म्हणतो ते उगीच म्हणत नाही. नागार्जुनाने आपला जो वारसा दिला आहे रसवैद्यांचा, तो रसवैद्यांचा वारसा हा या गोष्टीसाठी आवश्यक आहे की आपण समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जे पेशंट आहेत त्यांना बरं करू शकू. आणि मॉडर्न सायन्स निर्मितीला 200 वर्ष जरी झाले असले तरी अजूनही रसवैद्य हे काळा पारद आणि लाल पारद, ज्याला ब्लॅक मर्क्युरी सल्फाईड आणि रेड मर्क्युरी सल्फाईड म्हणतो, ते आपण विसरलेलो नाहीये. आणि नेमकं ह्या गोष्टी विद्यार्थ्यांना जे शिकवल्या जात नाही किंवा ज्याच्यावर स्ट्रेस केलं जात नाही, त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आम्ही अनेकदा बऱ्याच गोष्टी अशा पाहतो की ज्या विद्यार्थ्यांना पेशंटवर शिकवल्या जात नाही, ऍक्च्युली हे पेशंटवर शिकवले जायला पाहिजे. पेशंटवर शिकवण्याचा अर्थ काय की आम्ही औषध दिलं आणि ते पेशंटनी घेतल्यावर त्याच्यावर जो रिझल्ट आला तो रिझल्ट आम्ही त्यांना, आमच्या विद्यार्थ्यांना, आमच्या पीजी स्कॉलरला, आमच्या टीचरला आम्ही सगळ्यांना दाखवलं पाहिजे. माझ्या महाविद्यालयामध्ये उस्मानाबादच्या रुग्णालयामध्ये आम्ही हा प्रयत्न करतो. आणि हे जे काही सादरीकरण तुमच्या समोर येणार आहे, मी डॉक्टर कट्टेवारांचा जो माझा नांदेडचा विद्यार्थी होता पदव्युत्तर, त्याचा आभार व्यक्त करतो की त्यांनी ही संधी दिली. आणि हे जे काही तुमच्या समोरचं प्रेझेंटेशन आहे हे आमच्या कॉलेजमध्ये सेमिनारला झालेलं आहे. सेमिनारमध्ये आमच्या सगळ्या पीजी स्टुडंट आणि टीचर समोर मांडले गेलेला आहे. याच्यामध्ये महत्वाचा एक भाग जो आहे जो तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेट करायचा आहे. तर तुम्हाला काय कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे, तुम्हाला हे बघायचं आहे की मी जे काही सांगतो आहे किंवा ज्या काही गोष्टीबद्दल तुम्हाला सांगतोय, ज्या पण औषधाचा अभ्यास सांगतोय किंवा ज्या कल्पाबद्दलची माहिती सांगतोय, तो कल्प निर्माण होताना, त्या कल्पाला बनवताना आमच्या रसाचार्यांची काय पोझिशन होती, त्यांच्या डोक्यात कोणते विचार होते, त्यांनी कोणत्या पद्धतीने हे घटकद्रव्य एकत्र आणले आणि ह्या घटकद्रव्यापासून एक असा कल्प बनवला जो वेगवेगळ्या नावाने आमच्या समोर आलेला आहे. त्याला आम्ही वापरतो आहे. फक्त वापरतो नाही तर त्याच्यापासून चांगले रिझल्ट घेतोय. परंतु औषधं बनवताना आमच्या आचार्यांच्या डोक्यात जे काही कल्पना होती किंवा जे काही सायंटिफिक नेचर्स होते, जे आयुर्वेदाशी आणि रसशास्त्राशी संबंधित होते, काय ते आम्हाला समजतात, काय त्याचा आम्ही अभ्यास केलेला आहे, काय आम्ही ते समजण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी एक उदाहरण सांगेन तुम्हाला, आणि हे उदाहरण समझना याच्यासाठी गरजेचं आहे. ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि हमें ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं, व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट दिस. आवर आचार्यज थिंक एंड वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस. हमारे आचार्य अगर ये सोचते हैं कि हमने इस तरह से ये मेडिसिन बनाई है तो इसी तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए. आमचा जो थिंकिंग आहे ती थिंकिंग अशा प्रकारेच असायला पाहिजे अशी आमच्या आचार्यांची होती, पण ती तशी आहे का? इज इट राइट? क्या हम ऐसा सोचते हैं? तो इसमें एक बहुत सीधी सी बात है. मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. वो एग्जाम्पल ऐसा है जो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आए. वेरी राइटली यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिंगवाष्टक चूर्ण. हिंगवाष्टक चूर्ण एक ऐसा चूर्ण है जिसमें सिर्फ 8 दवाइयां होती है, 8 घटक द्रव्य होते हैं. किसने बताया कि 8 ही होने चाहिए, 7 नहीं हो सकते. किसने बोला कि इसको 9 नहीं करना चाहिए, 9 नहीं हो सकते. लेकिन हिंगवाष्टक के 8 ही घटक द्रव्य ऐसे क्यों होना चाहिए? क्या कॉज होता? व्हाट इज द कॉज टू ब्रिंग दिस इंग्रेडिएंट्स इन हिंगवाष्टक चूर्ण? ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब ये है कि हमने जो सोच बनाई है हिंगवाष्टक को समझने के बारे में, वी आर वेरी फ्रिक्वेंटली इट इज लाइक यूज लाइक ए पेटेंट ड्रग. हम पेटेंट ड्रग की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं. नहीं ये हो गया, पेट भारी है तो दे दो हिंगवाष्टक चूर्ण, डकारा आ रही तो दे दो हिंगवाष्टक चूर्ण. दिस इज नॉट द वे. ये इस तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हिंगवाष्टक को यूज करने. पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमने हिंगवाष्टक चूर्ण कैसे बनाया, कैसे बनाते हैं. तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एनाटॉमी में. वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर एनाटॉमी, द एनाटॉमी ऑफ स्टमक. हमें पेट की हर ऑर्गन के बारे में सोचना चाहिए जो
उस उदर की प्रक्रिया में आता है। तो उदर में जो जो ऑर्गन्स आते हैं हमें उनके बारे में जानना चाहिए, जो हमें एनाटॉमी वाले बताते हैं। उसके बाद हमें फिजियोलॉजी वाले बताते हैं कि उस एनाटॉमिकल ऑर्गन की फिजियोलॉजी कैसी होती है। और वो जब हमारे समझ में आता है तो हमें सबसे पहले जो निदान वाले गाइड करते हैं कि अग्निमांद्य, उनका निदान है अग्निमांद्य या अग्नि अजीर्ण या मंदाग्नि। और मंदाग्नि और अजीर्ण और अग्निमांद्य कम करने के लिए जो यूजफुल कैरेक्टर है वो कैसे आएंगे, तो उसका कॉज उन्होंने बताया है कि कफग्न, you have to use the कफग्न ड्रग इन हिंगवाष्टक। दैट मीन्स यू हैव टू चूज आग्नेय द्रव्य, हमें आग्नेय द्रव्य का चयन करना चाहिए। तो आग्नेय द्रव्य कैसे होते हैं? आग्नेय द्रव्य अग्निदीपक होते हैं, आग्नेय द्रव्य पाचक होते हैं। तो देख लीजिए आप हिंगवाष्टक के सभी 8 द्रव्यों को, वो 8 द्रव्य जो है वो पाचक होने के साथ साथ आग्नेय प्रधान होते हैं। फिर हम पंचमहाभूत के तरफ जाते हैं। तो पंचमहाभूत का जब हम ध्यान देते हैं तो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें अग्नि की प्राप्ति होती है। तो पंचमहाभूत में अग्नि प्रधान, तो हमने अग्नि प्रधान द्रव्य का चयन किया ताकि हमने उदरगत जो अग्निमांद्य और मंदाग्नि के लिए जो कफ जिम्मेदार है उसको नष्ट करने के लिए वी हैव टू कंट्रीब्यूट दिस थिंग। 8 द्रव्य का हमने ऐसे चयन किया कि वो हिंगवाष्टक में आएंगे और वो अग्नि को प्रदीप्त करेंगे, अग्नि वो कफ को कम करेगी और इस तरह से मंदाग्नि या अग्निमांद्य जो है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी काम करते हैं, क्या आपने ये कंसेप्ट कभी सोचा है कि हिंगवाष्टक कैसे बना है? हिंगवाष्टक को बनाने के लिए हमारे आचार्य की क्या सोच थी? और ऐसी सोच अगर हम बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते या हम अपने स्टूडेंट्स को इस टाइप से सिखाते हैं या बताते हैं तो हमें ये जरूरी समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। हमारे आचार्य सोचते थे कि नहीं हिंगवाष्टक को ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन हिंगवाष्टक सिर्फ उदर रोगों के लिए नहीं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वो आग्नेय है तो ठीक है ना, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं अगर वी हैव टू यूज, मैंने उसका इस्तेमाल किया है कष्टार्तव में। अब कष्टार्तव भी उदर से संबंधित कोई व्याधि नहीं हो सकती। यस इट इज, अगर वो लेडीज में होती है, महिलाओं में होती है तो उनका गर्भाशय से उसका रिलेशन होता है, लेकिन हमें हमारा शास्त्र ये बताता है कि अगर गर्भ को धारण करना है तो वो अपान वायु ही धारण करे। दैट्स इट इज वेरी सिंपल दैट हिंगवाष्टक चूर्ण इज अ मेडिसिन ऑफ अपान वायु। हम अपान वायु की मेडिसिन को निर्माण करते हैं, न कि हम अग्निमांद्य और मंदाग्नि। क्योंकि अगर हिंगवाष्टक चूर्ण में अगर आप 10 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण लेते हैं, उसमें 1 ग्राम शंखभस्म मिलाते हैं और कष्टार्तव की अगर पेशेंट को देते हैं तो बिल्कुल उसका कष्टार्तव कम हो जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है, लेकिन फिर हमने प्रकृति का भी परीक्षण किया। अगर वो पित्त प्रधान प्रकृति की है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा, यूट्राइन ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो पित्त प्रकृति की है और हमारे औषधि भी आग्नेय है। तो हमें चिकित्सा करते वक्त ये सभी चीजों को सोचना चाहिए। हम प्रकृति परीक्षण भी करने हैं, हमें देश बल काल का भी अध्ययन करना है और उसके बाद औषधि का चुनाव करना है। सीधी सी बात है, हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो किसी अग्निमांद्य और मंदाग्नि की मेडिसिन नहीं है, वो अपान वायु पर कार्य करने वाली मेडिसिन है और अपान वायु को वो अधोगामी करती है। इसका मतलब सीधी बात है कि गर्भवती अगर स्त्री अगर हिंगवाष्टक का सेवन करती है तो उसका अबॉर्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल, वेरी राइसी। जैसे कि आप रज प्रवर्तनी वटी के जो द्रव्य को अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप के द्रव्य उसमें है, त्रिकटु है। तो कंसेप्ट ये है कि हमें ये समझना जरूरी, वी हैव टू नो कि हमारे आचार्य ने अगर ये सोचा है कि कोई रसौषधि को निर्माण करते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स किस बेस पर आए हुए हैं। अगर हम ये नहीं समझ सकते तो हम वेरी ब्लाइंडली इसको योगराज गूगल दे दो, इसको रास्ता गूगल दे दो, इसको महारास्ता दे काढ़ा दे दो, वेरियस टाइप ऑफ हम ड्रग यूज करते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। आप अंधेरे में गोली चला रहे हैं, आप टारगेट पे नहीं गोली चला रहे हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि अगर ज्वरघ्न औषधियों में हिंगुल का सेवन किया, हिंगुल का प्रयोग किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज त्रिभुवन कीर्ति रस, इट कंटेन हिंगुल। मृत्युंजय रस, महामृत्युंजय रस, आनंद भैरव रस, ये सभी में हिंगुल के द्रव्य हैं जो ज्वरघ्न कल्प में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर से ये सवाल आता है कि हम ज्वरघ्न कल्प में कज्जली का प्रयोग क्यों नहीं करते?
तो कज्जली जो है वो आम, जब फिर हमें रसशास्त्र में जाना पड़ता है कि हमारी सगंध मूर्छना कैसी है और निर्गंध मूर्छना। ऐसे ही कोई चिकित्सक नहीं बनता, ऐसे ही कोई किसी द्रव्य का चयन नहीं करता, ऐसे ही कोई ड्रग सिलेक्ट नहीं करता। उसके लिए एक थरो स्टडी चाहिए। वी हैव टू मेक थरो स्टडी फॉर दैट। अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स को नहीं समझ पाएंगे, अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे रसकल्पों को इन द्रव्यों की क्यों भावना दी गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल त्रिभुवन कीर्ति को हम अदरक की भावना दे रहे हैं, त्रिभुवन कीर्ति को हम तुलसी पत्र की भावना दे रहे हैं, और उसमें काले धतूर के पत्र की भावना दे रहे हैं। तो मैं जो चीजें आपको आज बता रहा हूं उसको देखिए, समझिए, और जो ड्रग मैंने यूज किया, अगर मैं ब्राह्मी वटी भी यूज कर रहा हूं तो उसका कंटेंट्स देखिए, अगर मैं बृहद्वा चिंतामणि यूज कर रहा हूं तो उसके कंटेंट देखिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है बृहद्वा चिंतामणि को हम जोड़ों के दर्द में देते हैं। दोस्तों आप लोग समझते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर बृहद्वा चिंतामणि में मोती पिष्टी है तो वो संधिवात पे कैसे काम करेगी, नहीं कर सकती। तो वो व्यान वायु की औषधि, हमारा अप्रोच जो है आचार्यों का वो व्यान वायु की औषधियों के बारे में था। हमने बृहद्वा चिंतामणि का निर्माण इसलिए नहीं किया था कि आप संधिवात में इस्तेमाल करें, वो हृदयगत जो वात व्याधि है जो व्यान बल को बल देती है उसके लिए किया गया था। और ये हमें समझना बहुत जरूरी है, ऐसा हमें स्टडी करना भी चाहिए, और हमने हर ड्रग के बारे में ऐसा समझना चाहिए। तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, कुछ पेशेंट दिखाता हूँ, कुछ मेडिसिन के इफेक्ट दिखाता हूँ। और मेरे एक स्टूडेंट का कहना था कि आपका प्रेजेंटेशन देख के ऐसा लगा कि नहीं, ये जो रसकल्प जो है हम बाल रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कोई बाल रोग तज्ञ हूँ नहीं, मेरे पास बाल रोग का पीजी नहीं है, मैं तो रसशास्त्र का पीजी हूँ। हम तो बाल रोग की भी दवाइयाँ बनाते हैं, वी आर प्रिपेयर मेडिसिन फॉर द गायनिक आल्सो। तो देखिए ये एक वीडियो है एक बच्चे का जिस पर हमने रसकल्प का प्रयोग किया था। देखिए इस बच्चे को देखिए, ये खड़े होने का प्रयास कर रहा है, ही वांट्स टू स्टैंड, लेकिन ये नहीं खड़ा हो पा रहा है। क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा? सर व्हिडिओ शेअर नाही झाला. हॅलो, व्हिडिओ दिसत नाही सर. बघा व्हिडिओ त्यांना दिसला पाहिजे. आता दिसतोय? यस सर प्लीज प्रोसीड. आता अभी आप देखिए कि ये बच्चा कोशिश कर रहा है खड़े होने की, इससे मसल्स, ये उसकी मदर उसको फोर्स कर रही है कि खड़ा हो जा। ये बच्चा कोशिश कर रहा है, he wants to stand, लेकिन अब ये मदर की सुन भी सकता है। जब ये आया था 1.5 साल का तो उसके पिताजी और मदर ने बताया था कि वो किस कंडीशन में आया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फिर इसके बारे में हम सोचते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या क्या प्रयोग किए, कैसे किए। तो अगर आप सब लोगों ने देखा है तो मैं नेक्स्ट मोमेंट पे जाता हूँ। नेक्स्ट, अब ये बच्चा देखिए चल रहा है। जो बच्चा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वेरी फ्लुएंटली ही कैन वॉक नाउ, बहुत अच्छे से वो चल रहा है, अपने पिताजी को फॉलो कर रहा है। ये हमारे हॉस्पिटल का सीन है, हॉस्पिटल में हमने इसको शूट किया था। और ये कम से कम 1.5 साल 2 साल हमारे यहाँ रहा, हॉस्पिटलाइज रहा। और इसके ऊपर काफ़ी, ये इसकी मदर है और काफ़ी इस पर मेहनत की है हमारे स्टाफ ने, पूरे टीचिंग स्टाफ ने, पूरे पंचकर्म के स्टाफ ने, और काफ़ी मेहनत की गई है ये पेशेंट के ऊपर। प्रद्युम्न कुलकर्णी ऐसा नाम है इसका, और ये लातूर से बिलोंग करता है और अभी लातूर में है। ये इसके पिताजी हैं जो इसको चला रहे हैं, और इसके बारे में अब वो बताएंगे कि कैसे कंडीशन में ये आया था, उन्होंने क्या क्या किया था। याला जाऊ दे पुढे वडिलांना, त्याच्या वडिलांचा जो आहे ना तो हा सुरुवातपासून मागे अजून मागे जाऊ. हा, हॅलो सर, ऑडिओ नाहीये.
आता आहे का? आता आहे? नाही सर, शेअर करताना विथ ऑडिओ असा ऑप्शन येईल, त्याला चेक केलं की ते ऑडिओ येईल. विथ ऑडिओ असं करा. विथ ऑडिओ नाही केलाय का? तुला येत आहे आवाज? व्हिडिओचा नाही. चल लावून दाखवून दे आता सध्या, मग मी बोलतो. चल. काय जसं आहे तसं वेळ जातो. जसं आहे तसं दाखव. बंद कर. बंद कर त्याला. मोबाईल समोर इसके पिताजी कह रहे हैं कि किस कंडीशन में इसको यहाँ लाया गया था और किस तरह से उसको हमने दोनों हाथ में उठा के लाए थे और अब ये चल के जा रहा है. तो इस टाइप से वो पेशेंट हमारे यहाँ करीब करीब 1.5-2 साल रहा. देता है माझा आवाज देते. तो उसके लिए काफ़ी कोशिशें की गई. अब उसका जो पेपर केस पेपर है वो हम दिखाते हैं कि किस टाइप से कैसे प्रेजेंटेशन नॉलेज आहे की बस प्रॉब्लेम त्यांनी स्वतः सांगितले. मला काही बोलायची गरज पडली नाही. हा असा करतो तसा करतो. मी फक्त हो म्हणत गेलो. त्यांना एवढं नॉलेज आहे की गेलो उस्मानाबादला गेल्या लातूर मधले सगळे दवाखाने संपले. मग 50 ते 60% फरक पडला. खूप त्याची ग्रोथ झाली. स्वामी सरांनी ट्रीटमेंट घेत नंतर खापर्डे सरांची सल्ला घेतला. नंतर खापर्डे सर आल्यानंतर खापर्डे सरांनी स्वतः जातीने लक्ष घातलं. कल्प दिले. आता सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कल्पाला पैसे सुद्धा स्वतः त्यांनी दिले. माझ्याकडनं 3-4 महिने त्यांनी कसला तो खर्च घेतला नाही. कुलकर्णी म्हणले मला तुमच्या लेकरावर प्रयोग करायचा आहे. तुम्ही खूप म्हणजे परेशान होऊन इथं आलेले. 3 महिने त्यांनी औषधाचं नाव पण नाही सांगितलं. सगळ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा कुणालाच सांगितलं नाही. 3 महिन्यानंतर ज्यावेळेस त्यांचा प्रयोग सक्सेस झाला त्यावेळेस त्यांनी सगळ्यांना त्या औषधाचं नाव सांगितलं. मग प्रद्युम्नची ओळख झाली. आज पूर्ण आयुर्वेदिक कॉलेज प्रद्युम्नमुळं मला ओळखतो. त्याचं श्रेय मी सर्व स्टाफ इथला आयुर्वेदिक कॉलेजचा ज्यांनी मला इथं रुळवलं.
1.5 वर्ष राहण्यासाठी त्यांनी वातावरण मला पोषक ठेवलं. त्याच्यामुळे मी इथले शिपाई, इथले नर्सिंग, इथला टोटल मसाज सेंटर मधला स्टाफ, इंटर्नीज, MD, स्टुडंट, डीन सर स्वतः माझ्याकडे जातीनं लक्ष देऊन 2 दिवसाला 3 दिवसाला ते माझा फॉलोअप घ्यायचे, मला कॉल करायचे, मला व्हॉट्सअपने ते संपर्कात होते, नवीन व्हिडिओ ते मला टाक म्हणायचे. मग मी त्यांना सुरुवातीला ज्यावेळेस त्यांनी टोमॅटो दाताने चावून खाल्ला, तो माझ्या जीवनातला सगळ्यात आनंदाचा क्षण होता की तो स्वतः हाताने घेऊन चावून खातोय, कारण त्याला चावायचं कळत नव्हतं. खूप खूप मला सुखद धक्के भेटत गेले. त्यामुळे मी खूप आभारी आहे आयुर्वेदिक कॉलेजचा. त्यांनी सुखाची झुळूक माझ्या आयुष्यात दिली. मला अजूनही खरं वाटत नाही की माझा प्रद्युम्न चालतोय, तो मला ओळखतोय, तो घरच्या सोबत इंटरॅक्शन मध्ये आहे, सगळ्यासोबत खेळतोय. आज तो बॉलला बॉल म्हणू शकतो, तो चालू शकतो, ओळखू शकतो. याच्यात मी सर्व 99.99% श्रेय आयुर्वेदिक कॉलेज, तिथला स्टाफ आणि पूर्ण म्हणजे डीन सर, तिथले कळत न कळत ज्यांचं मला सहकार्य लावलं त्यांना देतो. धन्यवाद. चालू है क्या? अभी ये प्रेजेंटेशन जो है ये थोड़ी नेक्स्ट क्या करतो है तुम? हाँ जाऊ दे, दूसरा स्लाइड और नेक्स्ट नेक्स्ट. हाँ, ये पेशेंट की हिस्ट्री है. इसमें आपको उसके पिताजी ने अभी जो बताया था वो सारी चीजें हैं. पेशेंट कब आया था, किस कंडीशन में आया था, कैसे आया था, और वो जिस कंडीशन में आया था उसकी हिस्ट्री जब यहाँ ली गई है उसके केस पेपर पे दिखाते हैं. नेक्स्ट, ये उसकी हिस्ट्री है जो यहाँ के बाल रोग पेडियाट्रिस्ट वार्ड में जो उसके लिया गया था, और उसको इनिशियल जो ट्रीटमेंट दिया गया था बाल रोग डिपार्टमेंट की तरफ से. डॉक्टर TY स्वामी सर इसको देख रहे थे. हमारे यहाँ उनके डिपार्टमेंट में सबसे एक्सपीरियंस जो है ये एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर TY स्वामी सर. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें जो ट्रीटमेंट दिया गया था उनके तरफ से जो दिया गया था, स्नेह स्वेदन, पिंड स्वेद, मज्जा बस्ती, शिरोधारा, महाभृंगराज तेल. नेक्स्ट, अब ये जो चीजें इनको दी जा रही थी ये करीब करीब 4-6 महीने तक इसको रेगुलर दिया गया. और इसके बाद ये पेशेंट जब मेरे पास आया तो एक एडवाइस के लिए आया था कि बादाम पाक बनाने का था. वो पेशेंट के लिए बादाम पाक बनाने का था और इसलिए उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया था डीन चैम्बर में आके. तो मैंने फिर उसकी पूरी केस हिस्ट्री देखी और केस हिस्ट्री देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये बादाम पाक जो है वो नॉर्मल बादाम का नहीं बनाया जाएगा, इसको हम बनाएंगे मामरा बादाम का. तो मामरा बादाम जो हमारे पास गल्फ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, यहाँ आता है, तो मामरा बादाम की क्वालिटी और नॉर्मल बादाम की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है. तो वो ज़्यादा मिद्दे होता है. ये मिद्दे रसायन का जब चुनाव किया गया तो जब मेरे पास आया तो मैंने उसका स्टडी देख के जो उसकी प्रोग्रेस थी वो देखी, काफ़ी स्लो थी. और उस वक्त मैंने जो दवाइयाँ उसको चूज़ की थी, आई प्रिस्क्राइब ब्राह्मी वटी, जवार मोहरा, दैट इज जवार मोहरा रत्न प्रधान, राइट डाउन, जवार मोहरा रत्न प्रधान, जवार मोहरा सिंपल खदाई पिष्टी एंड जवार मोहरा रत्न प्रधान. दीज आर द 2 सब अलग अलग ड्रग्स हैं. दैट आफ्टर ऑल ताप्यादी लोह एंड देन वसंत कुसुमाकर रस एंड प्रवाल पंचामृत मौक्तिक. सो आई प्रिस्क्राइब दिस वन. एंड ये क्यों इसका चयन किया गया, आप देखिए ये सारे रसौषधि हैं, दीज आर द रसौषधि. लेकिन बृहद ब्राह्मी वटी का चयन कब करना चाहिए, हमारे पास सादी ब्राह्मी वटी भी आती है. जवार मोहरा रत्न प्रधान का कब चयन करना चाहिए, ताप्यादी लोह क्यों देना चाहिए, वसंत कुसुमाकर का हमने चयन क्यों किया है, और प्रवाल पंचामृत क्यों दिया है. ये सारी चीजें जो हम ये सोचते कि इसको देते वक्त हमने तो ये कुछ अलग सोच के दिया था. सोच के ये दिया था कि इसको मंद बुद्धि का, यानी ये समझ लीजिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसके कई कारण है. उसका एक बेसिक कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा. इसकी हिस्ट्री जब ली गई थी तो इसको दोबारा हिस्ट्री के लिए मैंने बुलाया था, और दोबारा हिस्ट्री लेते वक्त हमने बच्चे को टेबल पे छोड़ दिया था और उसके मूवमेंट्स को हमने कम से कम 15 मिनट देखा था. और बच्चे की जो दादी थी, मतलब पिताजी की माँ, उनको हमने बुला के लिया था और बताया था, पूछा कि इसके बारे में आप पूरी जानकारी बताइए कि क्या है. जब उन्होंने सारी चीजें बताई कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं, हमारे घर में और 3-4 बच्चे हैं 2 भाइयों के,
तो उसमें बाद में जो मूवमेंट्स कम आ रही थी उसको बूस्ट करने के लिए। अब जनरली ये होता है कि हम जब ये सोचते हैं कि या तो ब्रेन की ग्रोथ अच्छे तरह से नहीं हुई है, या ब्रेन में कहीं ब्लीडिंग हुआ है क्या, या और कहीं इन्फाक्ट हुआ है क्या, ये सारे हम मॉडर्न के इसके करके देखते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, ये इसमें कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था। वो मॉडर्न मेडिसिन की काफ़ी दवाइयाँ लेके आया था, पूना में एडमिट भी रहा था, लेकिन उसको इफेक्ट नहीं मिला। तो इस मेडिसिन के साथ साथ और क्या था नेक्स्ट। अब देखिए इसमें हमने कुमार कल्याण रस जो है वो एक नॉर्मल कुमार कल्याण रस इसको दिया गया था, तो हमने कुमार कल्याण रस को अपडेट किया। देखिए रसौषधि की या रसवैद्य की एक विशेषता ये होती है कि रसवैद्य अपने मन से जब चाहे उसको अपडेट कर सकता है। आप देखिए रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह नाम का एक बुक है जो कृष्ण गोपाल कालेडा का है और स्वामी कृष्णानंद जी ने इसको लिखा हुआ है, ये अजमेर की कंपनी। तो ये किताब मार्केट में मिलती है, 2 पार्ट में है, प्रथम द्वितीय खंड इसका मिलता है। इसमें उन्होंने ये बताया था कि आप जो ओरिजिनल पार्ट है कुमार कल्याण रस का, इसको अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इन्होंने सादा स्वर्ण अभ्रक भस्म लिया था, तो हमने सहस्त्रपुत्री अभ्रक भस्म लिया। इन्होंने मुक्ता पिष्टि ली थी, हमने मुक्ता भस्म, बच्चों को हम पिष्टि नहीं देते, कफ होता है, इसलिए मुक्ता भस्म लिया था। फिर षडगुण बलिजारित रस सिंदूर जो था, तो ये कॉमन रस सिंदूर लेते हैं कुमार कल्याण में, हमने षडगुण बलिजारित ने षडगुण रस सिंदूर लिया था। फिर सुवर्ण भस्म हमने ऊंजा फार्मेसी का लिया था, और सुवर्ण माक्षिक जो है वो 10 ग्राम लिया था। यानी जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसको हमने अपडेट किया था, उसकी पोटेंसी बढ़ाई थी। पोटेंसी हम बढ़ा सकते हैं, हम महायोगराज गूगल के भी पोटेंसी बढ़ा सकते हैं, हम योगराज गूगल के भी बढ़ा सकते हैं, हम ब्रदवा चिंतामणि की भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कब बढ़ानी है? जब हमको नॉर्मल फॉर्मेट से रिजल्ट नहीं आते। वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम नॉर्मल फॉर्मेट। नेक्स्ट, जो प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया गया था, इसको देखिए, प्रिस्क्रिप्शन को देखना बारीकी से बहुत जरूरी है, क्योंकि मध्य रसायन में व्रत ब्राह्मीवटी, जवाहर मोरा, ताप्यादिलो, वसंत कुसुमाकर, प्रवाल भस्म और कुमार कल्याण रस, ये सब दिया गया था। इसके साथ में सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म हमने उसको ऐड किया था, षडगुण बलिजारित रस सिंदूर ऐड किया था, और ये कुमार कल्याण को अपडेट करने के लिए। ये उसको देख सकते हैं आप। अजून कशाला समोर चालना, मागे घे, हाँ बस, अरे एक एक कराने मत। अब आप देखिए कि जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था जो बच्चा, प्रद्युम्न नाम है इसका, ये बाजू के फोटो में आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होता हुआ दिख रहा है। इसका मस्कुलर जो स्ट्रेन बड़ा है, तो हमने षष्टिकशालिक पिंड से भी किया था इसको, और हमने इसको बस्ती भी दी थी। लेकिन बस्ती देते वक्त हमारे ध्यान में एक बात आई थी कि इसको कौन सा ड्रग देना चाहिए बस्ती में। तो हमने पंचकर्म की जो विशेषज्ञ हमारे यहाँ जो थी एसोसिएट प्रोफेसर नागदे मैडम, उससे हमने कंसल्ट किया था, और उन्होंने हमें 3-4 ड्रग बताए थे। तो लेकिन बच्चों की इसमें वो कह रहे थे कि हमारा अनुभव नहीं है, हम तो पंचकर्म बड़े लोगों को करते हैं। तो बहुत सोचने के बाद हमने ये सोचा था कि गुड़वेल जो है, गुड़वेल का स्वरस, वो हमने बस्ती में इसको दिया था। वो करीब करीब हमने 15 से 30 दिन का प्रयोग किया था, और वो बस्ती इसके साथ दी थी। नेक्स्ट, ये बच्चा अभी मतिमंद बच्चों की जो स्कूल है उसमें ये खेल रहा है, बच्चों के साथ ये वो अभी कुछ एक्टिविटी कर रहा है अपने टीचर्स के साथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये अभी चल रहा है, आपने देखा था ये वीडियो में चल रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ताप्यादी लोह को कैसे हम करते हैं, देखिए आप लोग जानते हैं ताप्यादी लोह में स्वर्णमाक्षिक भी है, मंडूर भी है और लोह भी है। तो ये लोह जो होता है ना, तो ये लोह कौन सा, ये कम से कम हड़ताल और मैंशिल मारित नहीं होना चाहिए, ये दूसरे तरह का मारण किया हुआ होना चाहिए। दूसरा, अभी ये जो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता रहा था, मंडूर है, रौप्य है, स्वर्णमाक्षिक है, तो रौप्य युक्त जो ताप्यादी लोह आता है इसका आपने चयन करना है। मैंने इसी का चयन किया था। और शुद्ध शिलाजित जो है कृष्ण गोपाल कालेडा का शिलाजित सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ एक थीसिस पीएचडी में हुआ था जिसमें शुद्ध शिलाजित कौन सा अच्छा होता है इसका भी हमने एक प्रयोग किया था। तो उसमें डाबर का शिलाजित और कृष्ण गोपाल कालेडा का ये सबसे अच्छे माने जाते हैं, उसी को हमने लिया था। नेक्स्ट, वसंत कुसुमाकर का चयन हमने इसलिए किया था कि वसंत कुसुमाकर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं
ये देखिए, वसंत कुसुमाकर एक ऐसा यूजुअल कल्प है जिसका हम हर उम्र के लोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग जो सोचते हैं कि वसंत कुसुमाकर सिर्फ वृद्धावस्था में यूज करना चाहिए या सिर्फ इम्पोर्टेंसी में यूज करना चाहिए या और सिर्फ उसको कैसे पेटेंट करके रख दिया है कि नहीं हमने इसका ही इस्तेमाल यहाँ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें ये प्रेरणा यहाँ से मिलती है कि हमें उसके मस्तिष्क में जो मृत मांसपेशियां थी, मृत पेशियां थी उसके ब्रेन में, जो डेड सेल्स थे उसके ब्रेन में, उसको हमें फंक्शन में लाना था। और उसको फंक्शन में लाने के लिए हमें जो हमारा धातु का क्रम है, देखिए दोष धातु मल, हमने दोषों को साम्यता में लाके धातुओं पे काम करना था। तो धातुओं पे जब हम काम करते तो मस्तिष्कगत जो गतिविधियां होती है उसको ठीक करने के लिए काफी समय लगता है। मुझे नहीं लगता था कि उसके जो ब्रेन डेड सेल्स हैं वो काम करेगी, लेकिन हमने एक चांस लेके देखा। हमने वसंत कुसुमाकर के साथ ब्राह्मीवटी को भी ऐड किया और वो करने के साथ साथ हमें ऐसा लगा कि नहीं, उसका वेट गेन जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे हम समझ रहे थे कि रस धातु अच्छी हो रही है। तो रस धातु जब अच्छी होती है तो रस रक्त मांस मेद, और जब मेद अच्छा होता है तो ब्रेन में जो डेड सेल जो मेद से बनती है, देखिए हमारे कल्प कैसे बने हुए हैं, हमारे कल्प कोई पेटेंट मॉडर्न साइंस की तरह काम नहीं करते। अगर आप ये समझते हैं कि इसको यही देना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होता। हमने दोष धातु मल का अच्छे तरह से ही विचार करना चाहिए। ये तो छोटा बच्चा था 1.5 साल का, लेकिन अनुमान एक प्रमाण हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, अनुमान। इसको देने से रस धातु अगर पुष्ट हो गई तो हमें जाके मेद धातु में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वो रिजल्ट को हमने देखा, वो बच्चा अपनी माँ की कमांड सुन रहा था, इज eager टू लिसन, वो अपनी माँ को सुनना चाहता था। और वो जब कमांड देती थी कि उठ खड़े होने की कोशिश कर, तो वो करता है। अभी उसके पिताजी साथ में लेके चलते तो वो चलता है, यानी उसके सेंसेस भी डेवलप करना था। देखिए सीधी बात है, हम लोग नर्वस सिस्टम की बात नहीं करते, हम वात नाड़ी वह संस्थान की बात करते। हमारे कल्प जिस आधार पे बने हैं, वात नाड़ी वह, जो वात का वहन करने वाली नाड़ियां हैं उसका, हम उसी के ऊपर, हमारे ड्रग उसी पर बने हुए हैं। हम कहाँ न्यूरोलॉजी और ये सारी चीजें लेके नहीं बैठेंगे। हमें अपने कल्प को अपने तरीके से अपने फिजियोलॉजी के बारे में सोच के काम करना है, तभी जाके हमारे कल्प रिजल्ट देंगे, हमारे ड्रग्स रिजल्ट देंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं न्यूरोलॉजी में ये होता है, विटामिन B12 ये, ऐसा नहीं होता। वो अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही है। तो हम अपनी जगह इसलिए सही है कि हमारा ड्रग हमारे फिजियोलॉजी से बना है, हमारे निदान के आधार पर बना है, और इसलिए हम उसको इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि रस धातु को अच्छा करेंगे, उत्तरोत्तर धातु अच्छी होगी। तो उत्तरोत्तर धातु अच्छे होने में ब्रेन की धातुओं को भी हमने कोशिश की कि नहीं उसको हेल्दी बना सके। नेक्स्ट, अब ये भावना द्रव्य जो है, ये भावना द्रव्यों का बड़ा अपना महत्व होता है कि हम इनको भावना ऐसे क्यों देते हैं। तो ये वसंत कुसुमाकर के भावना द्रव्य हैं और इसके कारण ही उसकी एफिकेसी बढ़ती है। ब्राह्मीवटी में देखिए, मैं इसलिए ही आपको ये बता रहा हूं कि आप इसको सिर्फ देखिए नहीं, आप ये भी सोचिए कि जैसे हिंगवाष्टक में 8 ही है, वैसे इसमें इतने ही होते हैं। आप इसमें कुछ बढ़ाना चाहे और घटाना चाहे तो वो वैद्य की विवेक पे होता है, अपने विवेक से करिए। आपको जितना अनुभव है, मैं 37 ईयर्स अगर ये फील्ड में हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे ड्रग हमारे फिजियोलॉजी से बहुत अच्छा काम करते हैं, रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन आप मॉडर्न के हिसाब से देखने जाएंगे, करने जाएंगे तो नहीं, ये पेटेंट नहीं है। देखिए अभ्रक भस्म के साथ साथ अभ्रक भस्म एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, वात नाड़ी व संस्थान। आप चाहे अर्श कुठार देख लीजिए, चाहे श्वास कुठार देख लीजिए, आपको अभ्रक भस्म मिलेगा ही मिलेगा। तो अभ्रक भस्म की अपनी एक विशेषता है और रसौषधि में उसका अपना महत्व है। सुवर्ण भस्म, चंद्रोदय रस, मुक्ता पिष्टी, अकीक पिष्टी। ये देखिए अकीक पिष्टी और संज्ञाशो पिष्टी, मानिक पिष्टी, ये पिष्टियां जो होती है ये हृदय को बल देती है। अब हृदय अगर दवाइयां हृदय को बल देती है तो उसका जो ब्लड फ्लो ब्रेन के तरफ होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि धातुओं को पुष्टि करो। तो धातुओं की पुष्टि करते हैं तो रस से लेके तो उत्तरोत्तर सभी धातुओं तक हम उसको मूवमेंट दे सकते हैं, और उसी को देके हमने ये कोशिश की। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए कुमार कल्याण को हमने अपडेट किया था। आपको बताया मैंने कि कुमार कल्याण को हमने कैसे अपडेट किया था। तो साधे रस सिंदूर की जगह षडगुण रस सिंदूर,
कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, शास्त्र इसकी इजाजत देता है। तो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म का इस्तेमाल करिए, सुवर्ण भस्म जो अच्छा इस्तेमाल करिए, देखते रहिए कि सुवर्ण भस्म कम से कम हड़ताल और मेंशिल मारित न हो, मल्ल मारित नहीं होना चाहिए सुवर्ण भस्म, इसका जरूर ध्यान रखें क्योंकि यह बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट। तो इस तरह से मॉडर्न एक्शन कैसे काम करते हैं ये इसमें बताया गया है कि न्यूरोपैथी किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट। अब ये एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये बच्चे के बारे में हिस्ट्री में एक चीज सामने आई थी, ये ऐसा क्यों हुआ। ये बच्चे को ऐसा इसलिए हुआ है कि उसकी हिस्ट्री में उसकी मदर ने बताई थी कि कम से कम 6-7 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो 7, ये उनका पहला बच्चा था। तो 7 मंथ प्रेगनेंसी में जब मैंने सारी हिस्ट्री पूछी तो उसकी हिस्ट्री में ये आया कि एक बार उसके पेट में बहुत दर्द हुआ 7वें महीने में और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उसने सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी नॉर्मल थी, पेट दर्द कम हो गया था, उसने उसके बारे में आगे कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने जब हिस्ट्री ली तो उसने ये बताया कि वो वहां क्यों गई थी। मैंने पूछा कि आप वहां क्यों गई थी, क्यों ऐसे अचानक पेट में दर्द हुआ। तो उसने फिर हिस्ट्री में बताया कि लास्ट नाइट जो इंटरकोर्स हुआ था उसके हस्बैंड के साथ, उसमें वो थोड़ा कहीं पुश हो गया था बच्चा। अब वो पुश ब्रेन साइड में हो सकता है, वो नर्वस सिस्टम में, वो बैकबोन पे भी हो सकता है और बॉडी के कोई पार्ट में हो सकता है। इस तरह से अगर वो वहां हिट होता है तो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है डिस्टर्ब हो गई है और उसके कारण जितनी भी डेड सेल्स वहां हुई ब्रेन के उस पार्ट में, जो उसकी एक्टिविटी कम हो गई और जो बच्चा 1.25 महीने में चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा, जो बच्चा खड़ा होना चाहिए था वो खड़ा नहीं हो रहा, ये सारी चीजें उसके साथ नहीं हुई। और इसलिए हमने उसी पॉइंट को पकड़ के कोशिश की कि मेद्य रसायन दिया जाए और इस तरह से हमने कोशिश की कि ये दवाइयां दे के पंचकर्म करा के, पंचकर्म में हमने कोशिश की कि उसको महानारायण तेल, और हमारी ज्यादा कोशिश ये थी कि अभी मसाज के तो बहुत सारे तेल होते हैं, हम नारायण तेल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार हमने बच्चों के लिए महामाश, मेरा चयन महामाश था क्योंकि बच्चों को माश के तेल से ज्यादा ऊर्जा मिलती है और उसके मसल टोन अच्छा होता है। तो इसलिए स्क्रीन पर है ना, तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी था कि हम इसको दें। और षष्टिकशाले पिंड स्वेद शिरोधारा भी हमने इसको कराई और शिरोधारा में हमने महाभृंगराज तेल के साथ रोगन बादाम शीरीन तेल इस्तेमाल हमने किया, वो था हमदर्द का। और हमदर्द का तेल इस्तेमाल करने के कारण ये जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। बच्चा ठीक है, बच्चे के माँ बाप, फिर उसको दूसरा जब इशू हुआ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम था क्या करके मैं उसको देखने, उन्होंने बुलाया था, मैं गया और मैंने उसको ऑब्जर्व किया और देखने के बाद वो बच्चा बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन ये वाला बच्चा जो है प्रद्युम्न, ये अभी 6-7 साल का है, अभी ये मतमंद बच्चों की स्कूल में जाता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और कम से कम वो अपने बलबूते पे खड़े होता है, अपने हाथ से खाना खाता है, माँ बाप को समझता है। उसको हमने छोटे बच्चों में जाने के लिए कोशिश की कि उसको ले जाओ घर में, जितने जल्दी बच्चों में रहेगा तो ज्यादा पिकअप करेगा, तो वैसा हुआ और रिजल्ट आपके सामने है, मैंने पूरी स्टडी आपके सामने रख दी। नेक्स्ट, दूसरी एक केस मैं आपके सामने और रख रहा हूं। ये हमारे उस्मानाबाद में रेमंड की एजेंसी इनके पास है और इनकी तीसरी बच्ची है, ये छोटी बच्ची सोनाक्षी। ये बच्ची का नाम सोनाक्षी है, ये 1.5-2 साल की है और उसको कठारे, सोनाक्षी कठारे नाम है इसका। ये बच्ची के कुछ मूवमेंट्स जरूर देखिए। व्हिडिओ आहेत का याच्यामध्ये? व्हिडिओ आहे त्याच्यात? व्हिडिओ दाखव, काही आहेत का? नाही, छोटे दाखवते, छोटा मुलाचा फोटो होता। हाँ, ये बच्ची को देखिए आप, इसका इसके वीडियो असतील तर देखा दे। तो ये बच्ची को आप देखेंगे तो ये तीसरी बच्ची है और उनकी दोनों बच्चियां नॉर्मल है और तीसरी बच्ची जो है ये नॉर्मल नहीं थी, एब्नॉर्मल भी नहीं थी, लेकिन ये उसी तरह से पिकअप नहीं कर पा रही थी, जल्दी खड़ी नहीं हो रही थी, जल्दी जा नहीं रही थी, तो चल नहीं पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से है का वीडियो भाई? हाँ? तो इसका
दाखवते तीनों को दाखवा था शुरू से बताइए इसको। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन हमने अपने इसमें किया था, और ये प्रेजेंटेशन जब किया था तो उसकी कंडीशंस आपके सामने मैंने रखी है कि वो चल नहीं पा रही थी, खड़े नहीं हो पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। उसके कुछ वीडियोस जो हमारे पास थे वो अभी बहुत अच्छे से बात करती है, फॉलो करती है। उसको देखिए, हिस्ट्री इस पेपर दिखाइए। हाँ, अरे बॅक काय तर लहान मुलांचे आता सिम्पटम आले होते ना, तू कशाला लवकर चालवून राहिला? कमी कर स्पीड। हिस्ट्री नाही, नेक्स्ट। हाँ, अष्टमी विधि परीक्षा जो है वो आप उसको देख लीजिए। अष्टविध परीक्षा में उसको बताया किस तरह से, और दशविध परीक्षा हमने इसलिए, जब भी हमें आयुर्वेद का कोई ड्रग को चॉइस करना है हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं। आपने सुना होगा सितोप्लादी के बारे में, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि सितोप्लादी में 32% शुगर क्यों होती है, शर्करा हम 32% क्यों मिलाते हैं। तो जब हम वैशज रत्नावली में जाते हैं तो वैशज रत्नावलीकार कहता है कि सितोप्लादी जो है ये क्षयजन्य कास रोगाधिकार में मिलती है। क्षयजन्य कास रोगाधिकार में अगर वो बनाते हैं तो 32 गुना शर्करा डालना जरूरी है। देखिए किस तरह से फॉर्मेट चेंज होता है। आप उसको कम शक्कर अगर डालेंगे तो वो क्षयजन्य कास पे काम नहीं करेगी, तो हम उसकी जगह तालिसादी दे सकते थे, लेकिन वैसा नहीं होता। हमें सितोप्लादी ही चाहिए, क्योंकि सूखी खांसी कम करने के लिए हमें मधुर रस चाहिए, और मधुर रस हमें शर्करा से ही मिलेगा। तो हमारी दवाएं इस तरह से बनती, कब हमारे इस तरह से बनते हैं, इस तरह से सोच से हमारा काम होता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट। इसका सीएनएस एग्जामिनेशन आपके सामने अभी हमने रखा है कि वो किस तरह से देख नहीं पा रही थी ज्यादा अच्छे से, लेकिन अब उसकी जो आईसाइट है वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। और ये उसका प्रिस्क्रिप्शन है, इसको जब इसकी हिस्ट्री ली गई थी वो किस तरह से है, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। उसकी मदर हाईली एजुकेटेड है और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं। दोनों लड़कियों को मैंने बुला के देखा था, उनकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, उन्होंने अच्छे से उसको हैंडल किया था। लेकिन ये तीसरी जो है वो पिकअप नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी, उसके कारण आपके सामने देखिए। ये उसकी हिस्ट्री है, जो हमारे यहाँ पेशेंट को हमने एडमिट करके रखा था, उसकी हिस्ट्री है ये। और ये डायग्नोसिस जब करने गए थे तो ये तो इन्होंने मॉडर्न का डायग्नोसिस किया था, क्योंकि यहाँ के मैं समझता हूँ कि नए विलियम्स डिसीज करके उन्होंने उसको डायग्नोस किया था, लेकिन उस टाइप से हम लोग नहीं करते। ये हमारे कम से कम 500 साल पुराने हैं, मान के चलिए 300 साल पुराने हैं, तो भी मॉडर्न साइंस तो 200 साल का ही है ना। तो इसलिए हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मॉडर्न से ही हम अगर ये कहें कि मॉडर्न मेडिसिन का डायग्नोसिस करें और आयुर्वेद की दवाइयां दें, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट। तो इसके बाद ये इसके जो स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट के जो पेपर्स थे वो आए और उसको हमने देखा, और ये उसकी चिकित्सा है। आप देखिए कि 1919 ये 2019 में ये केस आई थी हमारे यहाँ। और इसकी चिकित्सा में हम देखे फिर क्या कर रहे हैं। फिर हम वसंत कुसुमाकर के तरफ गए, फिर हमने ताप्यदी लोह लिया और इसको 3 ग्राम ताप्यदी लोह में 1 ग्राम वसंत कुसुमाकर डाल के हमने 60 पुड़िया बनाई, इसको दिन में 2 बार दिए। अब इसका ऐसा चयन हम क्यों करें, फिर हमारी थ्योरी वही है, दोष धातु मल। ये हम दोषों को साम्य अवस्था में लाएं और हम धातुओं को पुष्ट करें, धातुओं को हम अच्छा करें। अगर धातुओं को अच्छा नहीं, नॉट इम्प्रूविंग द आवर धातुज, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र और आर्तव, अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ब्राह्म रसायन, एक चीज हमने इसको चूज किया था कि इसकी जो कैपेसिटी थी मदर्स की बातें सुनने की, समझने की, वो कम थी। तो इसलिए हमने कृष्ण गोपाल कालेडा का ब्राह्म रसायन, जो एक सुवर्ण युक्त आता है ब्राह्म रसायन, उसको हमने किया था। और सुवर्ण प्राशन हमने उसको 2 बार दिया था। सुवर्ण प्राशन हम जो हमारे हॉस्पिटल में जो करते हैं उस्मानाबाद के, उसमें ऐसा है कि नागार्जुन फार्मेसी केरल का एक सारस्वतारी सुवर्ण युक्त आता है। ये सारस्वतारी सुवर्ण युक्त जो है
ये रसतरंगिणी के आधार पे बनाया हुआ है कि गोल्ड क्लोराइड, हमने गोल्ड क्लोराइड बना के सारस्वतारिस में डिसॉल्व किया और नागार्जुन कंपनी वही सारस्वतारिस देती है, उसको गोल्ड प्रिपेयर्ड सारस्वतारिस को हम यहाँ हमारे कॉलेज में हॉस्पिटल में 1 चम्मच बिस्लरी के पानी में 2 बूंद हम डाल देते हैं सारस्वतारिस सुवर्ण युक्त और बच्चे को पिला देते हैं। ये हमारा सुवर्ण प्राशन हो गया। ये बालरोग डिपार्टमेंट में हमने इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया हुआ है कि इसका कितना गोल्ड परसेंट इसमें आता है 1 ml में। तो ये बहुत जरूरी है कि सुवर्ण प्राशन में हम जब कोई भस्म देने के बदले बच्चों को गोल्ड क्लोराइड कर में कन्वर्ट करें गोल्ड को और बाद में उसमें मिला के हम सुवर्ण प्राश के रूप में दें। ये हमने इसको दिया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उसके जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो बढ़ गई है, वो अपनी माँ की आवाज सुनती और समझती है कि माँ आई हुई है करके, पिताजी की आवाज को समझते, बाद में उनको पहचानने भी लगी थी। बाह्य चिकित्सा जो थी उसमें हमने महामाश तेल का फिर इसमें इस्तेमाल किया, षष्टिक शालिक पिंडस्वेद का इस्तेमाल किया और शिरोधारा में फिर वही हम भृंगराज तेल, रोगन बादाम, एक नॉर्मल तिल तेल और ब्राह्मी तेल का भी हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, ये इसको जो चिकित्सा दी गई इसको अपडेट करते गए हमने। ये 18/3 को किया हुआ था और ये कम से कम 30/6 तक हमने इसको 2020 में दिया है। फिर इसको इम्प्रूव किया, बृहद ब्राह्मीवटी, कुमार कल्याण रस, फिर ताप्य दिल हो रोपयु, फिर वसंत कुसुमाकर रस। इसमें हमने अभ्रक भस्म 1000 फुट कौन सी चीज को रसवैद्य कहाँ देना चाहिए, इस बात को अगर समझ ले तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैं बहुत अच्छे एक इंस्टीट्यूट से आया हुआ हूँ, श्री आयुर्वेद कॉलेज के, और मेरे उस वक्त जो हमारे गुरु थे पंडित शिवकरण शर्मा छांगानी जी, मेरे गुरु थे, उस वक्त प्रिंसिपल थे और मैं वहाँ स्टूडेंट था। तो मैंने गुरुराज शर्मा मिश्र जी को भी जो रस वैद्य थे उनको भी उनके साथ में काम किया, मैं उनको भी देखा। और उसके बाद हमारे यहाँ फिर काफी लोग आए थे, जैसे एलसी जायसवाल सर थे, द्विवेदी सर थे, पीडी गुप्ता सर थे, मंजरी द्विवेदी जी थी। तो बीएचयू की एक बहुत अच्छी टीम मेरे साथ वहाँ थी और मैंने इनके साथ काम किया है, तो इसको समझने का भी बहुत अच्छा मौका मिला। फिर बाकी कुछ बातें मैंने श्री दयालु मिश्रा जी से सीखी जो लखनऊ आयुर्वेद कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। तो ये चीजें हमें ये बताती है कि अनुभव तो हमें पैसे से मिलेगा नहीं, अनुभव हमें मिलता है किसी लोगों, जो अनुभवी लोगों के साथ काम करने से। तो आप अनुभवी लोगों के साथ काम करें या तो फिर खुद प्रयोग करें, पढ़ाई करें और उसके बाद आयुर्वेद की मेडिसिन को पेटेंट ना समझे और दोष धातु मल का भी ध्यान रखें। ये देखिए इसमें हमने ब्राह्मण रसायन भी दिया था और सुवर्ण प्राश भी उसको हमने दिया था। तो जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि मालिश के तो बहुत सारे तेल है, जैसे महानारायण तेल है, बला तेल है, निर्गुंडी तेल है, महामाश तेल है, बला तेल है, लेकिन हम बच्चों में महामाश का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि उससे मसल टोन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों की मसल जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। हमेशा हमने इसका ध्यान रखना चाहिए। और नेत्र तर्पण हमने शतावरी घृत से कराया था उस बच्चे का और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये जो है मेरे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन है कि हमने इस तरह से इसको दिया था और ये वो जो जिस लड़के ने इसको प्रेजेंट किया था हमारे पीजी स्टूडेंट के सामने, उसने इसको दिया था कि इस तरह से ये हमने दिखा दिया है। देखिए तो किस तरह से हमने फिर इसको अलग से, इस बार हमने बृहद ब्राह्मी वटी को अपडेट किया, हमने कुमार कल्याण रस को अपडेट किया। तो पूर्ण चंद्रोदय रस मकर ध्वज के नाम से आता है और मकर ध्वज के नाम से जो रस आता है इसको लेके हमने उसकी समान 60 पुड़िया बनाई जो हमने दिन में 2 बार 1 महीने के लिए दी थी। नेक्स्ट इसमें हमने वसंत कुसुमाकर के साथ अभ्रगवस्म फिर 1000 पुटी मिलाया और सुवर्ण प्राशन नागार्जुन का उसको देते रहे। ये मैंने लिखा हुआ मेरे हैंडराइटिंग का प्रिस्क्रिप्शन है, इसको मैंने लिख के दिया था। इसमें डेट है 30/6/2020। तो इस तरह से हम इसको अपडेट करते गए और अब बच्ची बहुत अच्छी है, चल फिर रही है। ये उसके 25/12 को, यानी समझ लीजिए कि ये दिसंबर जो अभी गया है उस दिसंबर को मैंने इसको रीराइट किया था। और उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि अमृत कलश महर्षि का जो है, महर्षि आयुर्वेद का,
अमृत कलश हमने इसको ऐड किया था और अमृत कलश हमने इनको खिलाना शुरू किया। और वो दिसंबर का महीना था, जनवरी फरवरी तक यहाँ ठंड रहती है, तो उसका कोशिश हमने ये की थी वो बृहन काम करे। बृहन कराया, ब्राह्मण रसायन से हमने मस्तिष्क का बृहन कराया और इस तरह से अब ये बच्चे के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये बहुत अच्छे हैं अभी। और अपने मदर जो बोलती हैं, अब उसके मदर ने बताया था कि हम इसको कुछ श्लोक हमने उसको बता दिए हैं। मिला है? तो एक वीडियो में आपको इथूनच दाखवायचं आहे. चालू कर. हाँ. हाँ, ये बच्चे को देखिए, ये बच्चे को देखिए, ये बच्चे आपको दिख रही हैं। ये इसका सेंसेशन देखिए, सेंसेसरी नर्वस सिस्टम देखिए, मोटर नर्वस सिस्टम देखिए, और जो दवाइयां हम किस कारण, देखिए आप मेजरमेंट मॉडर्न में करिए, आयुर्वेद में करिए, कोई नहीं, लेकिन रिजल्ट आपको देने के लिए जो डायग्नोसिस चाहिए, ड्रग को चुनने के लिए जो डायग्नोसिस चाहिए वो आयुर्वेदिक चाहिए, और वो रसवैद्य ही करा सकता है। ये काढ़े वाढ़े किसी काम के नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने कोई काढ़ा किसी को नहीं पिलाया, ना कोई वटी दी, ना कुछ। जो भी दिया है रसौषधि दिया है, बहुत कम मात्रा में। तो आप इसको देख सकते हैं। ये बच्चे का एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा है और एक वीडियो में आपको और एक दिखाता हूँ। इसका इम्प्रूवमेंट आपको पता चलेगा कि ये कितनी इम्प्रूव हुई। ये देखिए, ये बच्ची अभी जो है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज के फिजियोथेरेपी रूम जो है बच्चों का, उसमें वो बच्ची बॉल से खेल रही है बड़े, और वो चल भी रही है अपने हाथ से। उसको इम्प्रूव देखिए कि किस तरह से सारी एक्टिविटी जो है बच्ची की चल रही है। वो अपने मदर को फॉलो भी करती है, अपनी बहन का सुनती है, वो जैसा बोलती है वैसा। कोई बोलना चाहे वीडियो? उसकी ब्रेन की एक्टिविटी किस तरह से काम कर रही है, वो एक वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि वो किस तरह से उसकी बहन बोलती है ABCD या 1 2 3 4, वो उसको फॉलो कर रही है। ये अचीवमेंट बहुत जरूरी है कि हम अपने मेडिसिन के रिजल्ट बच्चों को बताएं। हम टीचर हैं, अगर अच्छा फिजिशियन बनना चाहते हैं तो हम ये चीजें आपको बताएं। बोलने वाले, श्लोक याद करने वाले और क्लास में आगे पढ़ाने वाले आपको 100 मिल जाएंगे, लेकिन पेशेंट जो अच्छा है करके दिखाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये क्वालिटी बढ़े, आप पेशेंट को अच्छा करें, आप अच्छा ड्रग चॉइस कर सकें, तो बेहतर है कि आप अच्छे फिजिशियन के पास काम करें, रिस्क लेना सीखें, मेडिसिन का पढ़ाई अच्छा करें, इंग्रेडिएंट्स की पढ़ाई करें। आए यार, ये देखिए, इस बच्ची को आप अच्छे से देख सकते हैं कि उसकी नज़र इम्प्रूव हो गई है, वो चल सकती है। ये पंचकर्म का सेक्शन है हमारे यहाँ का, बाल पंचकर्मा का सेक्शन है, और इसमें बच्चों के लिए स्नेह स्वेदन और षष्टिक्षालय पिंड से क्षीरोधारा, ये सारी चीजें होती है। पेशेंट को देखिए, वो समझ रही है कि क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। उसके सेंसेस जो है वो एक्टिव हो गए हैं, ब्रेन की एक्टिविटी काम कर रही है। अब इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना ये अपने हाथ में है। हमने उनके मदर को उसका डाइट चार्ट वगैरह दे दिया था, किस तरह से उसको ये सब खिलाएं और कैसे उसको डाइट दें। तो इसकी धातुएं जब अच्छी होगी तो जाके जब उसका हार्मोनल का सीजन आएगा, 12-14 साल की जब हो जाएगी, तो उसके हार्मोन्स में कोई कमी न रहे, इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। कम से कम 12-14 साल तक इसको दवाइयाँ देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फीमेल पेशेंट है, तो इसकी बाकी भी एक्टिविटी जो है, मेंसेस वगैरह की भी, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये पेशेंट रसौषधि से ही चलने लगा है, रसौषधि से ही काम करने लगा है। इसको कोई काढ़ा हमने दिया नहीं है, कोई चूर्ण नहीं खिलाया है। वैसे भी हम रसवैद्य हैं, इसके खिलाफ ही हैं। ओके, थैंक यू। अब इसके बाद मैं आपको तीसरी एक और कि रसौषधि का
पैरालिसिस के पेशेंट में हमने कैसे इस्तेमाल किया था, ये मैं आपको एक आखिरी केस दिखाता हूं और इसको देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और काफी, ये देखिए सोनाली नीलेश खोबरागढ़ करके, इसका है क्या वीडियोस हैं इसके। अब ये प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ हुआ था। ये सारे प्रेजेंटेशन हमने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के सामने और टीचिंग स्टाफ के सामने करते हैं इसको। तो आप पेशेंट देखिए, ये बेंगलोर की केस थी और नागपुर से भी रिलेटेड थी करके ये पेशेंट मेरे पास आया था। नेक्स्ट, इसके पेशेंट के 2 बच्चे हैं, 35 ईयर लेडी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर में जब इसको एडमिट किया गया था तब का इसका ये इसके सारे वो जो पेशेंट के जो सिम्टम थे सारे इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ नहीं हाँ, जब ये पेशेंट को देखा, हमने जब देखा उसको, तो इसमें ये सारी जो कंडीशंस थी ये मिली हमें। और ये पेशेंट मैंने यहाँ से ट्रीट किया था, लेकिन पेशेंट था नागपुर में। नेक्स्ट 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 ये पेशेंट का ब्रेन ऑपरेट किया गया था, इसको ब्लड क्लॉट था और पेशेंट जो थी वो सेकेंड डिलीवरी के बाद कम से कम 1.5-2 साल के बाद ड्यूटी ज्वाइन करी थी। और थोड़ा बॉदरेशन था, पेशेंट की हिस्ट्री में बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि इसको वोमिटिंग सेंसेशन आया रात को खाना खाने के बाद, और 1.5 घंटे के बाद इसको वोमिटिंग्स हुए। वोमिटिंग्स के बाद ये बेहोश हो गई और इसको जब हॉस्पिटलाइज किया गया, सीटी स्कैन कराया गया, तो ये जो ब्लीडिंग जो हुआ था इसको, तो ब्लीडिंग होने के कारण इसका ब्रेन ऑपरेट करने का डिसीजन लिया गया। और ये आपके सामने जो पिक्चर दिख रहा है ये इसी का है। नेक्स्ट, इस कंडीशन के बाद ये पेशेंट जो आया तो हमने इसको कुछ मेडिसिन को ये किया, तो उसमें बृहद ब्राह्मी बटी और जवाहर मोहरा रत्न प्रधान, इसके ही हमें एक 10-10 दिन की दवाई दी गई। दूसरा, इसमें खमीरे गावजा अंबरी जो अवलेह था ये दिया गया। फिर एक वसंत कुसुमाकर जो था और बृहदवा चिंतामणि हमने इसको दिया था 1 ग्राम, और वसंत कुसुमाकर 1 ग्राम, इसकी 10 पुड़िया बनाई थी। और इसको रोज शाम को 5 बजे शहद के साथ देने के लिए हमने सिर्फ 10 दिन का इसको इम्प्रूवमेंट दिया था, क्योंकि ये सिर्फ लेटी रहती थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, घूम नहीं सकती थी। और फिर उसको एक माश बला काढ़ा करके काढ़ा दिया गया था। तो ये काढ़ा तो जो था ये वात व्याधि के लिए जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं ऐसा काढ़ा दिया था। तो इसमें रासना, उड़द, सूंठी, अजवाइन, अश्वगंधा, बलामूल, ब्राह्मी और रोहिस्त्रोन, ये एक ऐसा काढ़ा है जो हम लोग अपने नागपुर में जो हमारे क्लिनिक है घर में उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, माश वाला काढ़ा करके। तो ये 5 ग्राम का काढ़ा बना के इसको दिन में 2 बार देने का था। इसमें माशबला में इसको सेंधा नमक और 1 चम्मच शहद 5, और इसमें महानारायण तेल बैद्यनाथ का 1 चम्मच, ऐसा ये मिला के हमने काढ़े में डाल के इसको दिया था। नेक्स्ट, हाँ, ये प्रेस्क्रिप्शन जो है ये मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ था और ये आपको बताया गया मैंने कि किस तरह से उसको ये दिया था। नेक्स्ट, शिरोधारा में हमने भृंगराज तेल का इस्तेमाल किया, रोगन बादाम का और तिल तेल का, ये तीनों इसका शिरोधारा के लिए इस्तेमाल किया। और शिरोधारा सिर्फ देनी थी, शिरो मसाज नहीं करना था उसको। और 2 मामरा बादाम हमने उसको पानी में रात भर भिगा के सवेरे खिलाने के लिए बताया था। 1 अंजीर देने के लिए कहा था जो दूध में बॉईल करके दे सकते हैं। नेक्स्ट, ये पेशेंट की फोटो दिखाओ। ये पेशेंट की फोटो है, आप इसको देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी कैसी है इसमें। और अपनी मेडिसिन देने के बाद कम से कम 20 दिन के बाद ये उठ के बैठ सकी है
और इस टाइप से वो कोशिश करती थी कि किसी चीज को पकड़ने की, वो पकड़ने की और किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करने के बाद वो खड़े होने की भी कोशिश की। नेक्स्ट। तो आप देखें कि इसकी एक आंख जो थी पूरी रेडिश थी, और वो आंख रेडिश होने का कारण भी ये था कि वो ऑपरेट करने के बाद उसका जो ये था वो उस पर इफेक्ट आ गया था, और उसकी यानी जो आंख जो है वो पूरी तरह से खुलती नहीं थी, तो इसमें कम से कम थोड़ा वो खुल रही है। नेक्स्ट। ये पेशेंट को लेके उसकी सिस्टर चल रही थी, इसको चलाने की कोशिश कर रही थी, और ये इसमें चलने की देख रही है कि वो कोशिश कर रही है। नेक्स्ट। ये देखिए, ये वीडियो है क्या? इसको प्ले करो। नेक्स्ट। ये पेशेंट बोलने की कोशिश कर रहा था, ये तो बिल्कुल ही बोल नहीं सकती थी, लेकिन बाद में वचा चूर्ण का हमने जीवा प्रतिसारण कराया था, कर्णपूरन भी कराया था ब्राह्मी तेल से, तो बात करने की कोशिश करती थी। कुछ ऐसी बातें जो आराम से हम लोग समझ पाते थे, जो कठिन शब्द थे वो नहीं समझ पा रही थी। नेक्स्ट। तो हाँ, वीडियो है क्या? ये देखिए, ये वो पेशेंट का वीडियो है जो चलने की कोशिश कर रहा है, और एक पैर उसका जो है वो अभी भी लैंपिंग कर रहा है। जैसे आप देख सकते थे कि वो पैर तो रख सकती हैं लेकिन उठा नहीं सकती थी, तो वो पैर थोड़ा घिस के चलती थी। तो इस टाइप से धीरे धीरे वो उसको चलाने की कोशिश करते थे। काफ़ी हेवी बिल्ड थी, 2 बच्चों की मदर थी ऑलरेडी, वो 35 ईयर ओल्ड थी। तो ये सब उसके घर के जो गार्जियंस थे उसको चलाने की कोशिश करते थे। बोलना चाहे वीडियो, और बोलने की कोशिश भी उसने की। अभी ये पेशेंट बेंगलोर शिफ्ट हो गई है, ये अपनी चलने की कोशिश तो कर रही है। ये देखें, ये पेशेंट अभी अपनी लकड़ी के सहारे एक एक पैर तो डाल सकती है, जो बिल्कुल ही चल नहीं सकती थी। लेकिन हमने ये पेशेंट में किसी गूगल का प्रयोग नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है, आप समझ लें कि गूगल को हजम करने के लिए बहुत अच्छा अग्नि चाहिए। ये पेशेंट का अग्नि बिल्कुल ठीक नहीं था। तो ये पेशेंट का अग्नि ठीक नहीं, अग्नि का महत्व बहुत अच्छा होता है, तो गूगल हजम करने के लिए उस टाइप से हमें आवाज देखिए, पेशेंट बोलने की कोशिश कर रही है, तो कम से कम वो बात करने की कोशिश करती हैं, लोगों को सुनती हैं, समझती हैं। और इस तरीके से ये रसौषधि और इनका प्रभाव ही ऐसा है कि ये मृतप्राय पेशेंट को जिंदा रखने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छा लाइफ देने की कोशिश कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम रसौषधि के कंसेप्ट को समझें। और रसौषधि के कंसेप्ट को हम कैसा समझेंगे? तो हमारे आचार्यों ने जब बनाया तो किस तरीके से सोच के बनाया, उनकी सोच को हमें सोचना चाहिए। जब तक हम उनकी सोच को नहीं सोचेंगे, हम इन दवाइयों का वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जैसा हमारे आचार्य चाहते थे। हम अपने तरीके से चाहे लाख कर लें, लेकिन हम वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें वैसा ही सोचना चाहिए जैसे हमारे आचार्य सोचते थे। क्या हम अपने आचार्य सोच तक पहुंच सकते हैं? उनके अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं? इन्होंने बृहदभाई चिंतामणि में मोती पिष्ट क्यों डाली, योगेंद्र रस को धान्य का राशि में क्यों पकाया, और रसराज रस को हमने क्यों इस तरह से जो अस्थिगत बात होता है उसके लिए हमने इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें इंग्रेडिएंट्स की पढ़ाई करनी चाहिए। तो हमने अभ्रभस्मों को अच्छा पढ़ना चाहिए, हमने ताम्र भस्मों को अच्छा पढ़ना चाहिए, लोह भस्मों को अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग तापतीय लोह का इस्तेमाल रक्त प्रसादन के लिए करते हैं। अभी एक समय एक सब्जेक्ट ऐसा आया था
कि हम लोग डीन चैम्बर में बैठ के बात कर रहे थे कि मेनशील का प्रयोग, अभी हमारे यहाँ मानस रोग का कल एक प्रोग्राम है, मानस रोग पे हमने एक सेमिनार लिया था, मानस रोग का एक बुकलेट है ये कि चंद्रोदयावर्ती में मेनशील का क्या रोल होगा। कि चंद्रोदयावर्ती तो हम हाथ पे घिस के आंखों में लगाते हैं, उससे बहुत सारे आंसू निकल आते हैं, तो ऐसा करने से मेनशील डालने से क्या हो सकता है, उसमें तो शंख भस्म भी है, उसमें बकरी का दूध भी है। तो हमारे आचार्यों ने चंद्रोदयावर्ती बनाते वक्त क्या सोचा होगा, क्या ये मानस रोग पे काम करने वाली दवाइयां हैं या ये कंजंक्टिवाइटिस पे काम करने वाली दवाइयां क्या है, किस लिए बनाया है। हम कोई पेटेंट नहीं चाहते, हमने देखा कि चंद्रोदयावर्ती आंखों में लगाने से आंसू निकलते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा सेंस आता है कि वो बात समझ सकता है, सुन सकता है, कर सकता है। तो ये मानस रोग में भी हमने ये देखा। तो हमारे घटक द्रव्यों के बारे में हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। जब तक हम उसको नहीं पढ़ेंगे, इसमें ये क्यों मिलाया है, उसमें ये क्यों डाला गया है, इसको ये भावना क्यों दी गई है, कस्तूरी की जगह हमने अंबर का प्रयोग किया है। अब मैंने ये जायसवाल सर से सीखा था, उनके अंडर में जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि वातकुलांतक ही एक ऐसी दवा है जो एक्यूट कंडीशन में पैरालिसिस में काम करती है। क्योंकि ये एक्यूट कंडीशन का पेशेंट नहीं था तो मैंने वातकुलांतक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वातकुलांतक में अंबर या कस्तूरी इसको मिलाया जाता है और एक्यूट कंडीशन में इसको हम मांसैधिक वात, जटामासिका मांसैधिक वात के साथ देते हैं। तो हमें रसौषधि का प्रयोग विभिन्न तरीकों से करना आना चाहिए, इसके लिए हमें घटक द्रव्यों की जानकारी होना जरूरी है। और हम अपना मूल्य तभी बढ़ा सकते हैं कि हम अपने आप को अच्छा अपडेट करें। बाद में आपको अगर लेक्चरर बनने के 50-60 हजार मिलते हैं तो वो आपकी क्वालिटी है कि आप उसको कमाएं, लेकिन अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करें और चिकित्सा करने बैठ जाएं तो आप एक दिन में 60,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अनुभव लेना पड़ेगा, अनुभवी लोगों के पास में जाके बैठना पड़ेगा। सिर्फ बैठना नहीं, अपने हाथ से भी बनाना आना चाहिए। तो हमने अपनी दवाइयाँ अपने हाथ से खुद बनाने का जो है वो हम एक प्रयोग करते हैं। मैं आखिरी में जाते जाते एक चीज आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल में, कॉलेज में दवाइयाँ बनाने के लिए सिखाता हूँ बच्चों को। तो किस तरह से, तो एक वीडियो में 2 मिनट का आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप इस वीडियो को देखें और देखें कि बच्चों को दवाई बनाना सिखाना आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कितना जरूरी है। समोर घे, नेक्स्ट समोर घे, इम्प्रूव कर और सम अजून घे, और ले और ले और ले, ये देखिए और आगे ले और आगे लेना जल्दी, द मेडिसिन आनी चाहिए और आगे लो और आगे लो। हाँ ये देखिए, ये गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज का एक हॉल है जिसमें मेडिसिन बनाई है बच्चों ने और उसका एग्जीबिशन लगा हुआ है। इस एग्जीबिशन के इनॉग्रेशन के लिए डॉक्टर राजेश इंगोले आए हैं और डॉक्टर लगड़ सर आए हैं जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ के टीचर्स है, एसोसिएट प्रोफेसर है। अब आप देखेंगे कि ये 5-5 के ग्रुप में बच्चों ने किस तरह से दवाइयाँ बनाई, हाउ दे प्रिपेयर द मेडिसिन, दे डिस्प्ले द मेडिसिन, दे एडवर्टाइज द मेडिसिन, वो सब अपना तरीके से अपना कर रहे हैं। क्योंकि ये क्वालिटी मेडिसिन डॉक्टर गुप्ता मैडम के अंडर में रसशास्त्र डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई जाती है। सिर्फ बनाई नहीं जाती, इसका सेल भी किया जाता है। च्यवनप्राश बनाया जाता है, अखंड सुधारक वटी बनाई जाती है, बहुत अच्छा त्रिफला घृत बनाया जाता है और बच्चे पैसा भी कमाते हैं। बहुत अच्छी बिकने वाली चीज यहाँ और एक है गुड़वेल सत्व, जो 5 मिनट में इनका स्टॉल बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ये बच्चे किस तरह से इंटरेस्ट लेके मेडिसिन बना रहे हैं और सिर्फ बना नहीं रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, लोगों को बेच भी रहे हैं। ये यहीं की यही बिक जाती है। आप इस पूरे हॉल में देखेंगे कि बच्चों ने अच्छी मेडिसिन बनाई है। यहाँ यूजी के बच्चे हैं, पीजी के स्टूडेंट्स हैं और इनका एक एक ग्रुप है 4-4, 5-5 बच्चों का, और ये बच्चे मेडिसिन बना के इसका डिस्प्ले दे रहे हैं। तो ये अच्छे मेडिसिन बनाने का हुनर हमने अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए। हमारे कॉलेज में गैदरिंग के पहले दिन सबसे पहला यही प्रयोग होता है और उसके बाद ही हमारे यहाँ गैदरिंग होती है। ये हमने इसको लगा के पिछले 7 साल से हम ये कर रहे हैं और जितने भी बच्चों ने यहाँ काम किया है वो अपने घर में जाके, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, जरूरी नहीं है एनाटॉमी वाला कंठ सुधारक वटी नहीं बनाए, फिजियोलॉजी वाला शतावरी कल्पनी, सबको बनाना आता है, सबको बनाना आना चाहिए।
आयुर्वेद की मेडिसिन अगर हम आयुर्वेद वाले नहीं बना पाएंगे तो कंपनियां हमको 35% कमीशन देती है और कमीशन के नाम पे जो भूसा बेचती है ना, वही हम पेशेंट को खिलाते हैं और अपना नाम खराब करते हैं। तो रसौषधि वालों ने हमेशा ये बात देखनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। आप देखिए, हमने करीब करीब 42 ड्रग्स बनाए हैं और ये सारे बच्चों ने बनाए हैं, यूजी पीजी वालों ने मिलके। और आप उनके चेहरे की मुस्कान देखिए कि वो गेस्ट लोगों को जब वो खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उनके चेहरे पे कितना कॉन्फिडेंस कि हमको ये बनाना आता है। ये तो अपना बिजनेस है। ये बच्चे अगर पास होने के बाद अपना भी बिजनेस कर ले तो ये बहुत अच्छा पैसा कमाने की एक हुनर है और ये हमको आना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Honorable Dr. Khapade sir, presenting a wonderful case study paper and spending a quality time. Now I request Honorable Dr. Sarsetti sir to give a counseling remark on first session. Namaste to all of you. Is it audible? Yes, sir. You are audible. Please proceed. Okay. And my special namaste to Dr. Khapade and Dr. Shriram Savrikar sir and everyone who has participated in this. And first of all, I extend my hearty congratulations to Datta Patil, principal, and the entire team of RSBK for organizing this national webinar on role of Rasoushadhis in neurological disorder. And I'm really proud of Dr. Prakash Kapade, who has presented case reports so nice with his a lot of experience. I have witnessed in his hospital whenever I visited Usmanabad. And it is most contribution for Ayurvedic practice. Whatever he shared is knowledge on Rasoushadhis with Panchakarma therapies. And I am grateful to the principal of Dhanvantari Ayurvedic College, Udgiri, and RSPK group for providing me an opportunity to be a part of this event. And already you have experienced a lot with Dr. Prakash Kapade with the practical experience, with the clinical evidence. And I would like to add within few minutes, because already we are delayed in this session. Whenever we talk about any treatment in Ayurveda, the basic things are to be taken into account before we plan. What is that? Nidana Parivarjana, Yukti Vapashraya, and Sattva-Vajaya Chikitsa. And moreover, it is clearly mentioned in Ayurveda, rather than thinking about a medicine, find the cause and then think of solution. Why you have to find the cause? Because there are main three basic causative factors have been mentioned in Ayurveda. That is intellect-related offenses and misuse and overuse of sense organs and effect of season and aging. Before you think of this Nidana Parivarjana, we have to find out the cause. Once you find out the cause, then Yukti Vapashraya, you have to plan which kind of treatment your patient needs. Because whenever you are planning any kind of treatment, the basic things are to be taken into account on Prakriti and digestion power, season and time, and Patya. And Patya in the sense, always we are paying more attention towards only diet factors. It's not like that. Aharajanya, Viharajanya, and Manasika.
So all these factors are to be considered before we plan our treatment, because drug and drug interaction and food and drug interaction have been well explained some 1,000 years ago in Ayurveda. So we cannot neglect this, the food factors or the psychological factors or the physical activities, whatever contribute for the effect of a drug. And especially when we think of Rasoushadhis, Dr. Savrikar initially in his inaugural speech rightly quoted the precautions, because the question arises always whenever we talk about Rasoushadhis, the safety and efficacy of Ayurvedic Rasoushadhis. And the second question, whenever we think about Rasoushadhis, where we need cook acting Rasoushadhis to get quick result. Second, whether we need sustained effect of Rasoushadhis in combination with the herbal and metallic preparations, and where we need long-term prescription or treatment is required for any kind of neurological disorders. And the third question arises about the effective dose and the particular adjuvant and particular the frequency, how many times it is to be administered, and the time of administration. Because the chronobiology is most important, what is mentioned in Ayurveda. So at what time the drug is to be administered, at what time the doshic factors or the biological factors variation takes place, irrespective of day, night, or after digestion, or even seasonal effect or aging considered. And apart from this, whenever it is possible to think the contribution of Ayurveda or contribution of Rasoushadhis in neurological disorders, we should not forget the limitation and contribution both together. And where is our limitation and where is our wonderful contribution is played in neurological disorders? Because even when neurosurgeons or neurophysicians also accept Ayurvedic role for a particular stage, for example, Ayurveda can play a better role as a supportive line of treatment or an add-on Ayurvedic Rasoushadhis along with their modern aids. Or whether Ayurveda plays an excellent role in rehabilitation, or whether we can manage independently direct management of the neurological disorders with Ayurvedic Rasoushadhis. So when we think of this Rasoushadhis or any kind of Ayurvedic therapeutical management, these measures to be adopted in neurological conditions, so always we have to think where, why, when Ayurvedic Rasoushadhis or therapeutical measures play in managing these neurological disorders. Then not only Ayurvedic doctors, even if you provide the clinical evidence or evidence-based data of this or neurosurgeons or neurophysicians, wholeheartedly they also accept, and automatically Ayurveda can be propagated well with evidence-based data. And I congratulate Prakash, this Khapade sir, because he has displayed wonderful the video with clinical evidence, and that kind of publicity should be there, and it should be provided or presented in not only Ayurvedic conferences, better to participate and present this kind of video or evidence based of Ayurveda based on this Rasoushadhis response in neurosurgical or neurosurgeons, neurophysicians conference too. And then only we can expect success and satisfaction and
monetary benefit to Ayurvedic practitioner and Ayurvedic practitioners at large. So with limited time, I would like to congratulate again and thanks to everyone and carry on a good message in a positive way to practice Ayurveda in neurological disorders. Thank you so much for the organizers, and I am very happy to be here after a long period of time with my RSBK family group. And thank you so much for providing me this opportunity. Thank you, Honorable Sarsetti sir, for a chairperson speech and concluding remark and comment on Dr. Prakash sir case study paper. Thank you for a wonderful session and joining. Due to lack of time, we are not taking any questions. Regret for the inconvenience. Now we will start our second session. I would like to request Dr. Balaji Kattewar sir. We start our second session. Sorry for technical issue. Thank you, Honorable Sarsetti sir, for chairperson speech and concluding remark and comment on Prakash sir case study paper. Thank you for a wonderful session and joining. Due to lack of time, we are not taking any questions. Regrets for the inconvenience. Now I would like to request Dr. Balaji Kattewar for the second session. We start our second session. Topic is standardization and management of Bhasma in neurological disorder. I would like to request Dr. Varnale sir to introduce our second session chairperson and expert speaker. For the second session, the chairperson, Honorable Dr. Balasaheb Pagire sir, Member of Academic Council, Maharashtra University Health Science Nashik, Professor HOD, Department of Rasashastra and Bhaishyaji Kalpana, SVNST, Ayurvedic Medical College, Rauri. The academic experience of the Pagire sir, UG and PG, oral and practical examiner. He is a paper setter and moderator, member of ex-exam committee and chairman paraclinical board, academic council member, Maharashtra University Health Science Nashik, and published various research paper nationally and international level. Now for the second session, we have invited Honorable Dr. Mukund Sabnis sir, MD Rasashastra and Bhaishyaji Kalpana, founder president of Jeevan Rekha Ayurvedic Chikitsalaya and Research Center, Aurangabad. Sir is working extensively on obesity and hyperlipidemic disorders. He has treated more than 45,000 patients obesity and entire the world. Working on the standardization of Ayurvedic medicine, published various books. For example, chemistry and pharmacology of the Ayurvedic medicinal plant and concept of the Rasayana. And he has attended many seminars, conferences, workshops, activity participant, many research works. He has established best research and development unit as well as well-equipped Ayurvedic drug testing lab at
Hello. हॅलो सबनीस सर. हा बोला सर. तुम्हाला को होस्ट केलंय, तुम्ही शेअर करू शकता स्क्रीन. ओके ओके ओके. So I am audible to you? Am I audible? Yes sir, yes sir. Okay. So respected dignitaries, Principal Dr. Datta Patil, Dr. Balaji Kattewar sir, Dr. Sarsetti sir, and my Guru Dr. Savrikar sir. I thank to give me a chance to share my views regarding the standardization of Bhasma preparation and its use in the nervine disorder. Here we have two subjects in this today's presentation. One is the standardization of Bhasma and how to use Bhasma in nervine disorders. In the previous session, we have seen a very classical presentation of Khaperde sir regarding its clinical applications. But as a student of Rasoushadhis and Bhaishya Kalpana, it is very important to elaborate at a maximum that how these medicines exactly work, whether they work, whether they don't work, whether they are absorbed, whether they are uptaken by the tissues. So all these things will be discussed in the use in the nervine disorders. So when we talk about the Bhasmas, metals were used since antiquity, and in even Ayurveda, Suvarna was used for internal use. Even in Sanhita Kal, Charak has used Lohadi Rasayan, Ayaskruti has been mentioned. Then Ashtanga have also mentioned regarding the use of metals for the internal use. But actually the golden days started for Rasoushadhis from the 7th to 14th century. And Rasarnav in detailed description regarding the Bhasma preparation or the incineration of the metals. Actually the word Bhasma is it actually means ash. So the process which converts the purified metals and minerals into Bhasma after subjecting it to the litigation with Swaras and Agni Samyoga, that is Puta, is called Maran. So that is the simple definition made by Yadavji Trikamji Acharya. And Maran is a process of transformation by which purified and detoxified material are transformed into absorbable, adaptable, and assimilable form. That's very, very important. That whatever the medicines we are using, whatever the metals we are using, it should be uptaken. Definitely, there are certain quotations by modern scientists that no disease has been coined without the deficiency of metal. So whatever the preparation, whatever the organo-inorganic complexes, we don't know today also that what is the organo-inorganic complexes which are getting created while preparing metals. Even by the IR studies, infrared studies also, we are not able to access very correctly. But whatever the organo-inorganic complexes are created, they
definitely have certain receptors on the certain tissues. They definitely have the receptors. So these are uptaken from the gut. These are transported to certain tissues, and those are assimilable by the certain tissues. They are uptaken and their work is done at a particular tissue level or a particular cell level of the tissue. So this should be uniformly done. Basically, when we call that Suvarna Bhasma, it should be a Suvarna Bhasma. Then we have to mention it by which process it is to be made. That is what the reproducibility of the formulation, what we are making, is the main cause of standardization of the medicine. If the medicine is not reproducible, reproducing the results, then standardization doesn't work there. For example, if you take a modern medicine and if I say that a paracetamol tablet is given to the patient, we have that confidence that it is going to work as an antibiotic because they have set their own in-house standards, own total standards regarding paracetamol. So similarly, such standards as per the processing of the specific bhavnas are to be made, which can assure the end user or which can assure the physician, yes, that this medicine is going to give certain results. So that is the main reason behind standardization. So when we make a bhasma, that is a reduction in the particle size or elimination of certain unwanted elements, transformation into a suitable compound form to make the material non-irritant to the GI tract, to increase the potency and the quality of the material, converge into absorbable, adaptable, accessible form, and to make the material suitable for the therapeutic use are the main objectives of making a bhasma. So the methodology which is used is again Shodhana, then Jarana, then Bhavana, then Chakrika Nirman, then Puta, then Swanga Sheath, then self-cooling, that is, then Samaraksha, that is the preservation. So all these methods are to be used. Even preservation is one of the most important part. Means forget about the methodology of preparation, but how it is preserved, because these herbal or organo-inorganic complexes, they react very badly with the atmosphere, with the oxygen present in the atmosphere. So the preservation is also very important in creating a standard thing. So when we talk about a bhavna, that is the process in which the powders or metals or ores are grinded with juice and decoction in Khalva Yantra. There are different types of bhavnas elaborated in the Rasa Shastra texts. So it should be made very clear that this type of bhavna was used to prepare this medicine, because bhavna has a great impact on the bioavailability of that particular bhasma. It is going to reduce the particle size. It is going to get charged. It is going to get charged. It is going to reduce the particle size, and this reduced particle size preparation is again going to get subjected to the putas or the agni, and then it will be going to get prepared. So what type of bhavna we are using, what process we are using to prepare a bhavna is a very, very important part. That Dravena Yavata Dravyam Churindram Tad Adrata Vrajet Tavena Dravo Divyo Abhishek Agbiharvindaho. So the quality of liquid which makes the dravya wet and gives the consistency of kalpa, that amount of liquid should be added to it. Then there are different types of bhavana which are mentioned, that dravena yavata dravyam eki bhuya ardrata varjet. Bhavyam dravyam samam kwatham ashtagunam jalam. So these are the way that kwath should be made, method of preparing kwath should be standardized. The juice, whatever we are using, what is the amount of juice what we are using, that should be standardized. Diva diva atape shushkam ratro ratro nivaset. So this is again the new method, that we are just drying the juices into the sun and keeping it again into the moonlight. So this is how the bhavnas are made. So basically, for example, if you take a simple example of Tribhuvan Kirti or Arogya Vardhini, in Tribhuvan Kirti, when we are giving bhavna, a sequence is mentioned, and this sequence is very important. In Arogya Vardhini, if we see that there are bhavnas, 7 bhavnas of Kadunimba juice. In Gandhak Rasayan, there are many bhavnas which are to be given. So actually, for example, if you take an example again of Arogya Vardhini, so actually 7 bhavnas of Kadunimba Swaras has been given or not.
Actually, that is the question of debate for the modern machines to get it analyzed very perfectly. We say that I'm using Shataputi Abrak Bhasma or Sahasraputi Abrak Bhasma, or in Gandhak Rasayan, there are hundreds of bhavnas are to be given. For every Dravya, 8 bhavnas, and thereafter again Chaturjat and all these things, we know it. So whether actually these bhavnas are given or not, that is a big question, and that should be get analyzed very properly when we are going for the standardization of bhasmas. That's very, very important. If we go into the market to see it very practically, if we are going to the market and buy Gandhak Rasayan, it's so cheap. And if we prepare, we have tried along with Savrikar sir, we have tried to prepare Gandhak Rasayan. It's very, very difficult. Afterward, it gets converted into plastic sulfur. So really, whatever the Gandhak Rasayan has been mentioned into text, and whatever we are getting into the market, whether it is matching somewhere, it doesn't match anywhere. So whatever the tools we are using for the analysis or for the standardization of the bhasmas, whether the specific amount of bhavnas are given or specific amount of putas are given, or whether they are given correctly or not, is one of the important aspects of standardization of bhasma. That's very important. So bhavna in its effect, so it is a wet titration process. Advantage of bhavna are following that material are mixed uniformly, surface area of the material exposed and expanded with facility during the marana, so develops softness, smoothness, stickiness, and not only that, the impact of other dravya. For example, in Arogyavarde, the impact of Kodunimbaswaras, or in Tribhuvankir, the impact of Surasadraka Himabhi. So all the impact of those drugs is also there while elaborating the pharmacological activities of these bhasmas. So that's why it's very important. Similarly with puta, so it is a heating system and heating schedule which indicates the quantum of heat required by the rasadravya for their own conversion to suitable pharmaceutical form or dosage form, and how much heat is desired. So exactly these putas are also to be standardized. When we are making a bhasma, it's a very critical part to standardize a bhasma, because it is not only the end product what we are getting or whatever we are doing, that is we are standardizing the raw material, we are standardizing the process standardization, and the end product standardization is not only there, but even we have to standardize the methods whatever we are using for preparing the bhasmas. For example, in bhavna, that is puta, then jarana, all these are to be standardized very, very correctly. Then and then only a standard end product can be achieved. So when we are doing jarna to obtain the powder form of puti loha, or bhavna, we have discussed, that is Chakrika is the algorithm process that converts fine powder quantities of bulk drugs into small free-flowing spherical units. So these are all the whatever the process we are doing while preparing a bhavna. So shodhana, jarana, bhavana for metals having low melting point. For metals having high melting point, that is shodhana. Then again shodhita materials, that is then it is exposed to specific drugs. Then it is exposed to incineration, that is a maraka dravya. And here also bhavna plays a very important role while preparing, while going for marana also. So the concept of using metal particle is prevailing since Charak Samhita. For a metallic preparation of Lohadi Rasayan, iron is used to heat up until red hot and quench in some liquid immediately until flakes of iron become in fine powder form. So different types of bhasmas are prepared. The most important thing is that the dravyas which are used for shodhan and maran, they are specifically used to target specific disorders. For example, there are a number of types of tamra bhasma, loha bhasma, or suvarna bhasma, or rajata bhasma. Number of types are mentioned, and they are used in specific adhikar or specific diseases. So it is very, very important to mention, actually what I feel it should be mentioned on the label, that this medicine has been used, this medicine has been processed for use of certain, for example, Shwasadhikar or Panduadhikar or such type of adhikars, and the way of method of preparation should be inserted into the specific packing bottles, that this is the way of preparation and this way we have prepared it, and this is the
whatever the fingerprint we have, that fingerprint of either it should be from IR or any fingerprint what we can develop about that Bhasma or in-house standards, whatever we have prepared, that should be presented on the insert. That then and then only an end user or a physician can be knowing that yes, this Bhasma I am bringing, Tamra Bhasma, that is it is to be used for Shriram or it is to be used in Udara or it can be used in some other diseases. So that's very important, that what type of what we are targeting out of that Bhasma, and according to that it has to be standardized. That's very important. So Bhasmas are unique metallic mineral preparations treated with herbal juice or decoction, which are known in Indian subcontinent since 17th century AD. And widely recommended for treatment of variety of chronic ailments. So animal derivatives such as horns, shells, feathers, metallic and non-metallic and herbals are normally administered in Bhasmas. So these are also to be standardized. Even Ayurveda texts have also elaborated the standardization methods of the Bhasmas. They have definitely elaborated the standardization methods. So they talk about the color, that is Varna of the Bhasma. So specific Bhasma has specific colors. So this Varna is coming or not, they have mentioned it very clearly. Lusterless or nischandritvam. So Bhasmas must be lusterless before the therapeutic applications. For this test, Bhasma is observed under bright sunlight, whether lustrous, which typically we use it for the Abrak Bhasma. Then lightness and fineness, Bhasmas float on stagnant water surface. This test is based on law of surface tension. So properly incinerated Bhasmas need to float on water surface. And then the tactile sensation. That tactile sensation can be absorbed and assimilated in the body without producing any irritation to mucous membrane or gastrointestinal tract. So this is again a very important concept regarding the standardization of Bhasmas, which has been elaborated by Ayurveda text. Then again, coming to the chemical characteristics, that is apunarbhato has also been mentioned. And it means that is incapability to regain original metallic form. And for this test, Bhasmas is mixed with equal quantity of seed of gunja, honey, bee, borax, then sealed in earthen pots, and that everybody knows the process. And again, Niruthatvat is to test inability to regain metallic form of metallic Bhasma again. So here silver is used. So these are the chemical characteristics were also elaborated by Ayurvedic Rasashastra text actually to make the standardization of the Bhasmas. So which are the steps used to prepare Bhasma Shodhana? In Ayurvedic, purification is called Shodhana, in the process through which the external and internal impurities of the metals and minerals are removed. It is not only removing the external and internal purities, but also it is the Shodhana process is to make the Maran process more easy. So it is a pre-Maran process. So that is the elimination of harmful matter, modification of undesirable physical properties, and conversion of some of the characteristics of the drug to different stages and enhancing the therapeutic action. So Shodhan, standardization of Shodhan and standardization of Maran is very, very important when a whole Bhasma is standardized. How I'm going for the Samanya Shodhan, how I'm going for a Vishesh Shodhan, and what are the medicines which I am using for the Maran, whether I'm using mercury for the Maran, whether I am using Ariloha for the Maran, whether I am using Muli means herbal medicines for the Maran. So that is very important, because the end product, whatever we are going to get, it solely depends on the process of Shodhan and Maran. So that is to be standardized very correctly. So so Maran is basically a burning process or calcination. So the purified metal is placed into a mortar pestle grounded with a juice as a compound of mercury, such as mercury chloride and amalgam of sulfur and mercury, that is Kajjali, is prepared. The metal that is intended for Maran is known as primary metal or Pradhana Dhatu. The other metal is taken, small proportion for the Maran of the primary metal is known as a secondary metal or the Sahadhatu. So Maran differs from the nature of the substance to be calcinated. For example, organic substances such as herbs are burnt in open air, whereas inorganic substances such as metal like silver or gold or other metals are burned in closed containers. So in either case, the end product of Bhasma in the Maran, for example, the end product in the case of silver is called Rajata Bhasma, in Suvarna is called Suvarna Bhasma, and likewise it is to be understood. So when we are preparing Bhasma, Puta method is, Kupi Pakva method is there, and Puta method is there. Again, Jarna, Shodhana is there, Jarna is there, Bhavna is there, and Maran is there. Maran is created from this either method or Kupi Pakva method. When it comes to the standardization of the Bhasmas,
that is the botanical authentication is very, very important, which is a highly tough process. Specifically, identification of the metals is again a very, and that too identification of the ores, for example, Suvarna Makshik and all such type of ores. Then foreign matter, then organoleptic evaluation should be there, macroscopic and microscopic studies should be there, volatile matter should be studied, ash values should be studied, extractive value should be studied, chromatographic profiling should be there, marker component is very, very important, where we are lacking a lot in the marker component of the bhasmas. Pesticide and residue is also very important, because the herbs, whatever we are using, their pesticide residue can come into the bhasmas. Then heavy metal contaminants, because it is again a very important issue into the international market when the bhasmas are coming to the, or the metallic preparations are coming to the international market. The heavy metal contaminants are very, very important, that how much heavy metals are there into the bhasmas, or whether it is to be mentioned very correctly, because if you go by the, I think, European FDA and some documents from the France, it is again, they have clearly mentioned that whether the toxic substances are intentionally added to the formulation or they are coming as a part. So when they are intentionally added, we are intentionally adding many times the heavy metals. So it should be mentioned very correctly that these heavy metals are intentionally added into the formulation, and the bhasma will show the heavy metals as it is, because we intend to use these heavy metals as a pharmacological medicine, which is going to elect a pharmacological response. That should be very, very clear when we are standardizing the bhasmas. So these important things are very important when we are into the standardization. Then coming for the bhasma varna, that is a big list, that every bhasma has some different type of color, and that color is also to be standardized. That can be standardized very nicely. There are again bhasma, physical and chemical bhasma parikshas are important when we are standardizing the things, that is varna, varitaratva, rekha purnatva, then ajana, that is softness, nischandra, lusterless, then sukshmatva, that is fineness. When it comes to the chemical standards, then tastelessness, then absence of fumes, irreversibility, punarbhatva, niruttha, then amla pariksha, sour test, and lack of alkaline test. So these are the chemical test and physical tests which are used for the standardization of the bhasmas. So again, a jwala varna is very important, that when we put those bhasmas into the flames, it gives a different type of flame. And these jwala varnas are also used in the standardization methods by Ayurvedic texts. So to identify the bhasma or to standardize the bhasmas. Then what are the modern parameters? In modern parameter, that is energy dispersive X-ray analysis is used. Transfer electron microscopy used to identify the particle size distribution. Then electron probe microanalyzer is used for the distribution of the individual elements. XRD is used. XRF and pikes, that is X-ray fluorescence study is used. Then electron spectroscopy for chemical analysis is used. An MR is used. Infrared spectroscopy is used. Then matrix assisted laser desorption ionization is used. So these are the very high-end instruments where these can be used for the standardization of the bhasmas. The one thing very, very important is that what we people, when we are studying for the post-graduation or for the PhD, that these instruments were never meant to standardize the Ayurvedic products. That's very important. These instruments, they are specifically made to standardize a single molecule. But whatever medicines we are preparing is not a single molecule. It is a complex of many chemicals or organo-inorganic complexes. Many organo-inorganic complexes are present into it. And then we are subjecting these organo-inorganic complexes for these high-end machines, which are not at all prepared for the standardization of metals or for the standardization of the bhasmas. This thing should be made very, very clear when we are analyzing all such things. So there are certain limitations of these high-end machineries also, which can't give a very, very correct answers for the standardization of the herbal metals. For the standardization of herbal mineral components or the bhasmas. So bhasma as a nanomedicine, then it comes to the standardization because we have to check the particle size. So
definitely we have found some nanomedicines into the bhasmas. It may, specifically, many times we talk about the nano gold or the nano silver. So such type of, which are very precious metals, we talk about the nanoparticles and nano suvarna bhasma or nano sizing of the rajata bhasma. They increase the surface area, they enhance the solubility, they increase the rate of dissolution, bioavailability, more rapid onset of action, and decrease of dose is needed when we are thinking about the nanomedicines when we think about bhasma. One thing is very important, what Khapade sir in his previous lecture also told, that really whether we people or those people who have prepared these bhasmas in those days, really whether they were expecting nanoparticles into the bhasmas or not. Okay, today due to the sophistication of the instrumentation, we can identify, yes, this bhasma has nanoparticles. But really whether we expect these nanoparticles into the medicine, because these nanoparticles are also having their own side effects. Whether we are expecting that certain portion of the Suvarna Bhasma or Rajata Bhasma, which is in the nanoparticle form, whether we are expecting it to pass the blood-brain barrier or not. And if it is passing, then what is the impact of that passing of those bhasmas on the nervine tissues? That's very, very important. So there are so many different ideas coming out of the nanomedicines, and it's, I think, what I feel personally, it is very wrong thing to label it as a nanomedicine. It should not be labeled as a nanomedicine. Okay, whatever the nanoparticles are getting created, that is a part of the whole bhasma what we are preparing. But we are not expecting to create any nanomedicine into bhasmas. That's very important. So some of the limitations while administrating metal particles are tissue retention and renal clearance. That's again very important, because when we talk about standardization, we say every time that we have to reproduce the results, and whatever the medicine or whatever the end product of bhasma I have prepared, it is whether it should, because my intention is to give it to the patient and treat the patient. Ultimate, that is the only intention, but whether it is getting uptaken or not, whether it is going to have an impact on the affected tissue, and whether it is going to leave that tissue or whether it is going to get deposited into the tissue as it is, that should be studied very clearly. So some of the limitations while administrating metal particles are tissue retention and renal clearance. So how the metal is going to get cleared out of the body, or whether it is going to get deposited into the smooth muscles or into the cells of the organs, that should be studied very correctly when we are also considering, because pharmacological standardization is also very important. Standardization doesn't limit only up to the manufacturing. Pharmacological standardization is also very important. So pharmacokinetic studies are also very important when it comes to metallic preparations. So numerous studies were carried out to determine the particle size, chemical composition, and nanobiocellular interactions. So however, pharmacokinetics and cellular interactions are not fully understood. That's very, very, very important. Still, we are struggling to identify the cellular interaction of the metallic preparation of Ayurveda or the bhasmas and its pharmacokinetics. It's very, very difficult. It's not fully understood yet. The main drawback to determine the biological effect of the incinerated particle is their structural complexity. But we actually, as a Rasoushadhis Bhaishya Kalpana expert, we expect the structural complexity, and the machines and the methods and the methodology, whatever we are using, that are not meant to explore the structural complexity of the bhasma. That is very important, and batch to batch, very lot of batch to batch variations are there when it comes to bhasma. So it is really a very tough job to go for the standardization of the bhasmas. So when it comes to the physiochemical analysis, color, LOD, total ash, acid insoluble. So these are certain particle size assays of the element. These are certain physiochemical analysis what we apply when we are going to standardize the bhasmas. Now coming to the use of bhasmas into the when we are coming to the use of the bhasmas into specifically nervine disorders, the neurodegeneration. One minute. The neurodegeneration is a complex and multifaceted process leading to many chronic disease. When we think as an Ayurvedic person, we think about it may be a cerebrovascular accidents, or it may be what kind of a paralysis like thing. So
when we talk about the nervine disease, it is a multifaceted process leading to many chronic disease states, and a conventional definition implies a progressive neural death, which usually affects a specific population of the nerve cell, the vulnerability of which determines the clinical manifestation of a particular neurodegenerative disease. So in such type of pathology of the nervine disease, how our bhasmas are going to work? That is a very big question. So because whenever we are talking about the effect of these bhasmas on the nervine tissues, so that is what exactly these medicines, what exactly these organo-inorganic complexes, what exactly they are going to do to the nervine tissue, that's very important. So the factor that underlie the neurodegeneration can be classified as it is genetic, or the environmental, that is extrinsic neurotoxins, that is metals, infective damage, or it can be a biological, that is aggregation, abnormal folding and accumulation of the proteins into the nervine cells, or it can be metabolic, that can be oxidative stress, or it can be cytotoxic, that is intrinsic neurotoxins, metals and etc. amino acids, or autoimmune, or it is aging. Exactly where my medicines are working, that should be known to the prescriber. That's very important, what I feel. That whatever the prescription, maybe Bharatvat Chintamani I am giving, or whatever the preparation of Suvarna Bhasma I am giving, Rajat Bhasma I am giving, or any Bhasma, whenever I am prescribing, actually the prescriber should think about all these things, that what is the pathophysiology of the nervine tissues, and whether that pathophysiology is going to get affected by my bhasma. So each of these factors can play a crucial role in the etiology of the neural degeneration, but with an influence that varies between the different pathologies is very important, and we should know that where it is working. So the neurodegenerative disorders characterized by the presence of abnormal protein components which accumulate in the brain, leading to selective loss of neuron, is an age-dependent manner, such as it may be an amyloid body. In Alzheimer's disease, in AD, amyloid bodies are very important to create a pathology into the brain or in the nervine tissues. So amyloid nucleotides and neurofibrillary tangles, whether whatever medicine I am going to use, whether they are going to bring out the amyloid bodies which are getting deposited into the nervine tissues or not, that is to be seen. Then in Parkinson's, alpha synuclein or Levy bodies, whether we are going to, my medicine is going to work on Levy bodies or not. In prion disease, similar in Huntington's disease and Pick's disease. So these are the aggravated proteins which are getting deposited, and in today's that era, that we should be able to identify that these our bhasmas are working at this level or not. That's very important. So the other, whatever the main pathologies are there into the nervine diseases, there are three main pathologies what we can identify. That is, one is the oxidative stress, second is the protein aggregation, and third is the redox active metal ions. So are all considered to be the promising pharmacological target for those medicines which are working on the nervine system. So the apparently critical involvement of the metals, particularly iron, copper, in both oxidative stress and protein aggregation process, therefore renders chelation therapy a sensible strategy. Whether whatever medicine we are giving to the patients, whatever metallic preparations we are giving to the patient, whether it is having a chelating activity on that specific tissue is not, that should also be known to us. So the interesting feature of a suitable chelating agent would be the ability firstly to scavenge the free redox active metal present in excess in the brain to form a non-toxic metal complex. That's very important. So whenever there is a metal deposition, and that metal deposition is creating a pathology, whether whatever the metallic preparation I am going to give to the patient, these metallic preparation can scavenge the free redox active metal present in the brain and make his non-toxic metal complex. Whether my medicines are doing all such activity or not, that should be at least thought by the prescriber. That's very, very important, preventing any mediated toxic action. So the newly formed stable metal complex would favor the state in which the metal is not redox active, and therefore it can become non-toxic. It can prevent the further free redox activity, and then can prevent the further damages.
So the latter mechanism implies additional interaction between the drug and the target protein, which have to be considered in the design whenever we are preparing a particular bhasma. So protein aggregation and oxidative stress have been demonstrated to be the major factors involved in degeneration in Alzheimer's or maybe in Parkinson's or any other neurodegenerative disease, because maximum times when we talk about nervine disease, we have to think about the neurodegenerative disease only, because when we talk about cerebrovascular accident are total metabolic disorders which can be due to the what we call as microvascular. It is a microvascular disease. It is not actually a disease of nerves. It is a disease of vessels. It is a disease of small capillaries where it gets hardened. So when we talk about the nervine tissues disorders, we have to talk about the neurodegeneration process. In majority of majority time it's the Alzheimer's or Parkinson's or aging disorders of the nerves. So metal ions play a crucial role acting as mediators of neurotoxicity, either by favoring plaque formation or redox cycling. Thus they provide a suitable pharmacological target for the treatment of neurodegenerative disease. So it is very important to see that whether my bhasma or whatever the herbo-mineral preparation I am giving to the patient, whether they are electing such type of pharmacological activity or not. That's very, very important. So the development of the effective non-toxic therapeutic agent for such complex and comprehensive brain disorder represents an extremely challenging task. So this idiopathogenesis of what we call Alzheimer's or Parkinson or any other neurodegenerative disease. So the chelation therapy may be considered as valuable strategy both for the treatment and the investigation, and whether my metallic preparation is working as a chelation therapy or making the redox cycling of the previous deposited metal, whether it is stopping or holding the redox cycling and making the metal non-toxic to the cell. That can be the mode of action of the metals which we are using into the neurodegenerative diseases. So this is all about the uptake of Suvarna Bhasma. So this can be, Suvarna Bhasma can be uptaken by sublingual method also. There are some research papers which have shown that it can be uptaken sublingually. Absorption of Suvarna from Suvarna Bhasma with black pepper as a bioavailable enhancer. You can see that many metallic preparations, herbo-mineral preparations, majority of them, they have Trikatu or they have Pimpli because it is a bioavailability enhancer. So along with the Pimpli or Piper longum, it has increased the bioavailability enhancing activity, and absorbance of IU from the Suvarna Bhasma of gold from the Suvarna Bhasma with black pepper powder and ghee. So whenever it is given along with the sublingually, the rate of absorption, it goes to peak in a very small period. So what is my intention to give the patient? Whether I want a fast results, it can be administered even sublingually, it is uptaken, or along with pepper, it is uptaken, or along with ghee and pepper also, it is taken. So black pepper or Pimpli is recommended Anupan for Suvarna Bhasma, which is proven bioavailability enhancer for many medicaments. So not only Piper longum, but there are many even herbs and even metals, even Kajali. Kajali is a very, very good. We have studied on the effect of Kajali on mice, and we have seen that Kajali is very, very good bioavailability enhancer, not only for Ayurvedic preparations, but we have seen that Kajali is a very good bioavailability enhancer for antibiotics like ciprofloxacin or antihypertensive like atenolol. We have worked on it and we have seen the effects. So even making Kajali while preparing Suvarna Bhasma or preparing metallic preparation along with Kajali, it increases the bioavailability of the main medicine or of the main dhatu which is to be intended and which is to be given to the patient. So such type of combinations of the metals means we have seen that we say that metal which is marit with rasa, it is having a superior quality. Then Muli bhi Madhyamam Prahu Kanishtam Gandhakadi bhi. So on what basis they have classified? They might be have classified on the basis of the bioavailability and the electing the pharmacological activity at a cell level. On that basis only they have classified the preparation of Bhasma into Rasam Marit or Muli Marit or Gandhaka Marit or Ariloha Marit. So this classification may be on that basis only.
So when we talk about the neurodegenerative diseases or nervine disorders resulting from dysfunction of the degeneration of motor neurons, which can be characterized by different pathological hallmarks as exemplified in multiple sclerosis, again a very important disease, demyelination. Not only multiple sclerosis, even if you take a simple diabetic neuropathy, or whatever the neuropathies of the nerves due to different metabolic disorders, how my medicine is going to work or going to stop the pathophysiology of those diseases by amyotrophical lateral sclerosis or Friedreich ataxia or progressive supranuclear palsy. All these things, how these medicines are going to work, that should be clearly understood by the prescriber. So there are different type of diseases, that is multiple sclerosis is there. Then many disease of central nervous system is there. Then Friedreich ataxia, the most common hereditary ataxia, accounting for 50% of all cases. That is, hereditary ataxia is an autosomal recessive degenerative disease. So whether, because we know about the herbs, that certain herbs are known to downregulate the genetic expressions. Similarly, whether the metals I am going to use, they are going to downregulate the genetic expressions of the hereditary diseases of the nerves or not, that is also a point to be discussed and point to be researched, that if they have a very good, what we call a genetic downregulation activity, they can work very nicely. So the loss of neurons in the amyotrophical lateral sclerosis, that is ALS, which is one of the most common neurodegenerative disorders, and Parkinson's disease, result from the complex interplay of the oxidative injury, exotoxic stimulation, aggregation and dysfunction of the critical proteins and genetic factors. So these proteins which are present as RNA or DNA or the genetic expressions, whether how these proteins they respond in neurodegenerative disorders to the metals, whatever we are using, because ultimately, whether it may be any disease, ultimately these medicines are going to work on these proteins only. And if they're working on the proteins or they're working on the amyloid bodies, or if they're reducing the redox potential of the metals which are deposited and creating more pathology, then and then if we are controlling these pathologies, then and then only our medications can prove very superior to the then contemporary medicine in working in the neurodegenerative disorders. Then amyloid bodies, the essential feature of the Alzheimer's disease that we have discussed, that is the presence of the extracellular plex constituted into the amyloid bodies peptide deposits. So these amyloid bodies isoforms are 39 to 42 residue peptides. So whether these medicines, they are working on the amyloid precursor protein. Okay, patient has established with Alzheimer's, but if I am using Suvarna Bhasma for that patient, then whether that patient is going to control the amyloid precursor protein or not, that's very important. Interestingly, these peptides have been found also in the healthy individuals, suggesting a physiological role in amyloid bodies, which is unclear. So the toxicity seems to be mainly associated with amyloid 42. So whether my medicines are working in such area or not, that is to be identified very correctly. Then the mode of action. Pharmacological effects exerted by the therapeutic agents depends upon its ability to cross the biological membrane into systemic circulation and reach the site of action. This is usually occurred in one or two pathways, that is a paracellular or transcellular. So most drugs are transported transcellularly depending on the physiochemical properties. However, the paracellular route is usually the main route of absorption of the particles, and specifically the nanoparticles which are present in the bhasmas. This is governed by the tight junctions into the cell. So the uptake or the effect of those medicines, they are seen either by paracellular route, they are uptaken, or they are uptaken by the transcellular route. So the tight junctions are a multiple unit structure composed of multiple protein complex that affiliates with the underlying apical actomyosin ring. So this tight junction protein identified include transmembrane proteins, occludin, claudin. So whether these medicines, our bhasmas, they work on these tight junctions or not, that should be identified. Then only we can tell the patients, we can tell the students that yes, these are the exact mode of actions of the bhasmas, and that's why they will be working or they will be controlling the neurodegeneration in the neurodegenerative disorders. So although the adaptive mechanism and specific regulation of these tight junctions
are of active investigation and remain incompletely understood, it is known that some polymer can promote their widening, facilitating absorption of the particle into systemic circulation. So regarding Suvarna Bhasma, it has been established that the tight junction visualization studies that Suvarna Bhasma particle are capable of opening tight junctions, thus facilitating the Bhasma particle to be absorbed into the systemic circulation and comes in direct contact with the blood. Thus, the Suvarna Bhasma particles should be highly compatible with the blood. This has been studied very correctly. So we know the uptaken, that they are either transcellularly or paracellularly they are uptaken, and these Suvarna Bhasma particles, or it has been studied only with Suvarna Bhasma. So these Suvarna Bhasma particles, they work through the tight junctions and uptaken, and then they are poured into the blood. It has also been demonstrated that uptake of gold nanoparticles occurred in the small intestine by absorption through single degrading enterocytes in the process of being excreted from the villus, and gold nanoparticles typically less than 58 nanometer in size, reaching various organs through blood. This is very, very important, that whatever the particle size I am giving to the patient, if they are less than 58 nanometers, then it can be uptaken through the blood from the intestine, which suggests the importance of blood compatibility studies for the standardization of Bhasma preparation. That's very important. Since gold in the Suvarna Bhasma is approximately 28 to 35 nanoparticle in size, it can reach the affected site on oral administration via intestinal absorption and possibly can release AU ion in a sustained manner required for the therapeutic action. That's very, very important again, that the mode of action is not immediately or dose dependent. It works in a very sustained manner, and these results enforce the application of Suvarna Bhasma as a therapeutic agent in clinical medicine from the safety point of view. Definitely it is safe, but it works in a very sustained manner. Means if you are giving Suvarna Bhasma for 10 days, thereafter for a month also it can elect the results. That's very important regarding Suvarna Bhasma. So it is reported that uptake of gold nanoparticles occur in small intestine by resorption, degrading enterocytes in the process of being excreted from the villus. It is possible that Suvarna Bhasma formulation would reach the affected site after oral administration, along with other drugs which are supposed to be act on gastrointestinal tract. Besides this, gold nanoparticle also act as significant drug delivery system. Means this can be also a drug delivery system for carrying other metals or other herbal medicines also, capable of encapsulating active substance to reach the target site. That's very important. So like as we are using liposomes in herbal medicines nowadays, similarly we can encapsulate other drugs, Ayurvedic drugs, along with Suvarna Bhasma to reach correctly to that particular tissue or particular cell. That's very important. So this is what is about Suvarna Bhasma, and this Suvarna Bhasma is primarily excreted from the urine. So again, renal clearance is again very important, and a very little part is excreted from the feces. This I have discussed actually. So these are the Suvarna Kalpa indicated in Vata Vyadhi. Compound name, that is Vata Gajankush Ras is mentioned, Vata Nashini Ras, Vata Kantak Ras, Chintamani, Bharatvat Chintamani, Chaturmukh, Yoga. So these are the list of medicines which are specifically used in Vata Vyadhi or nervine diseases. So this is again a very good list I have taken from one of the paper of my colleague. So this is a very good list where gold is used into Vata Vyadhi and some herbomedical compounds are used in Vata Vyadhi. Then coming to Rajata Bhasma, it is known to be Smrutikar. It is known to be Medhyakar, it is known to be Brahmahar, Apasmarahar, Unmadahar by various Ayurveda Acharya. It is used. And Silver Bhasma is an Ayurvedic medication prepared from silver that has been used in Ayurveda for the treatment of several conditions such as vertigo, polydipsia, and loss of memory. It has been shown to exhibit its therapeutic benefit when consumed in the dose of 30 to 125 milligram per day. Bhasma is often consumed in combination with sugar, ghee, juice, or adulsa. It is believed to be fortify the property of herb which is to be consumed. So Suvarna and Rajata both work as a bioavailability enhancer. That has been proved very correctly in many research papers. So in vitro analysis of the intestinal epithelial cells was carried out
using various microscopic techniques to study their potential as a bioenhancer. And definitely, as I told, that even Rajata Bhasma, it also works as a very good bioavailability enhancer. It can be used as vehicle to carry the other metallic preparation or the other herbal preparation to target the tissues. So this is what is the what I feel should be focused. We should focus neurodegenerative disorders when we are talking about nervine disease. We should focus on what are the mode of action of the medicines, how they are going to work, how they are going to uptaken, whether they are going to get retained into the tissues, after how many days they are going to get excreted, and what are their exact pharmacological indications, and in which pharmacological dose they are to be used. That should, if that is monitored correctly, if that is standardized correctly, I think definitely these medicines can be used very nicely along with as a main course of treatment, not only as a supportive drug, but as a main course of treatment. This can be used very nicely in many nervine disorders. So I thank the chairperson, I thank Dr. Datta Patil, principal of Dhanvantari College. I thank the organizer to give me a chance, and I thank all the listeners to have a patience listening. Thank you very much. Thank you, Dr. Honorable Sabnis sir, having a nice and very wonderful, very informative lecture. Now, I request Dr. Pagire sir to conclude the session. नमस्कार, मी पागिरे सर बोलतोय. सर, आता जो मी धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर दत्ता पाटील सर, त्याचप्रमाणे माननीय श्री वैद्य श्रीराम सावरीकर सर, त्याचप्रमाणे डॉक्टर खापडे सर या सेशनला प्रेझेंटेशन केलं. त्याचप्रमाणे दुपारच्या सेशनला डॉक्टर सबनीस सर यांनी आधुनिक पॅरामीटर त्याचप्रमाणे आयुर्वेदिक पॅरामीटर यांची संयुक्त पद्धतीने योग्य सांगड घालून सुवर्ण भस्म आणि इतर जे भस्म आहेत त्यांचं स्टँडर्डायझेशन त्याच पद्धतीने आयुर्वेदिक पद्धतीने आणि मॉडर्न पद्धतीने कसं करावं याचं विश्लेषण अतिशय सखोल ज्ञान देऊन पूर्ण केलं. त्याचप्रमाणे ते स्वतः एक प्रॅक्टिशनर आहेत. प्रॅक्टिशनरच्या अप्रोचमधून आयुर्वेदाचे मेडिसिन त्यांनी पूर्ण पेशंटला वापरून त्याप्रमाणे त्यांनी त्याचं नॉलेज शेअर केलं. तर सबनी सरांचे वैयक्तिक या निमित्ताने अभिनंदन करतो. त्यामुळे त्यांनी छान लेक्चर्स दिलं. त्याचप्रमाणे प्राचार्य सर यांचे आभार मानतो आणि रसशास्त्र डिपार्टमेंट धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उदगीर कट्टेवार सर, त्याचप्रमाणे पवार मॅडम यांचे संयुक्त आभार मानतो. आणि सेशन छान प्रकारे अरेंज केला आणि प्रॅक्टिशनर त्याचप्रमाणे लेक्चरर्स, पीजी विद्यार्थी, यूजी विद्यार्थी यांच्या दृष्टीने हे जे नॉलेज आहे क्लिनिकल अप्रोच जे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मधल्या, त्याप्रमाणे खापडे सर आणि त्याचप्रमाणे सबनीस सरांनी योग्य पद्धतीने प्रेझेंट केल्या. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. हा, दत्ता पाटील सर, कट्टेवार सर. Thank you, Dr. Pagire sir, for concluding the session. Now, I request Dr. Varnale sir for talk. Good evening, everyone. Myself, Dr. Gururaj Varnale, assistant. Assistant Professor of Rasoushadhis Physical Department, Dhanvantari Ayurvedic Medical College, Gururaj. I would like to thank Honorable Dr. Shriram Savrikar sir, Chairpersons Dr. Sarsetti sir and Dr. Pagire sir, joining us with their knowledge. I would like to thank our guest speaker, Dr. Prakash Kapade sir and Dr. Mukut Sabnis sir, giving their valuable knowledge and time. I would
like to thank our principal, Dr. Dattatreya Patil sir, for giving permission to organizing this national webinar. I would also like thanks to our academic coordinator, Dr. Avinash Jadhav sir. Also, I thank to all participant, UG, PG students, teaching staff, medical officers, and practitioners. Thank you so much. Feedback form link is shared. Feedback form link is shared on the YouTube chat box. Please fill the feedback so that e-certificates can be generated. If the feedback form is not given or it is not filled, then e-certificate will not be issued.